हेलो 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 एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? हैप्पी संडे। मेरा तो यहाँ सुबह चल रहा है, सुबह सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह उठा हूँ मैं। बट दिस इज अ बिग डे फॉर आवर चैनल। भाई कौन आया है यहाँ पे, देखिए, अंशुमन भाई फ्रॉम द यूनाइटेड रोड। अरे भाई। भाई साहब, फाइनली फाइनली हम दोनों साथ में स्ट्रीम कर रहे हैं। आई थिंक साथ में हम लोग विवेक भाई के साथ स्ट्रीम किए थे, बट दिस इज द हाँ, फर्स्ट स्ट्रीम वी आर डूइंग टुगेदर अपने चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट मैन, अप्रिशिएट अ लॉट मैन। काफी टाइम से बात हो रही थी साथ में करने का, बट फाइनली वी डिड इट। कैसे हो ऐश आप? पे वही टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है, राइट। आपकी, हाँ, आपकी सुबह है, हमारी शाम है। आई एंड नो आई आई डिड नो। नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग इट कि मतलब 7-8 बजे, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं पता होता कि भाई कुछ और ना प्लान बन जाए। एग्जैक्टली मैन, सो आई वाज एग्जैक्टली। लाइक कि 6-7 बजे तो आई एम एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो एक सवा घंटा तो मेरे को कहीं नहीं जाना। ठीक है, उस तरीके एब्सोल्युटली। से कुछ प्लान वगैरह है नहीं, तो आई वाज लाइक कि अभी ही कर लेते हैं। संडे का थोड़ा ये हो जाता है ना, व्हेन यू लुक एट अदर डेज, तो भाई संडे आई आई जनरली प्रेफर, अगर उस तरीके से होना तो सैटरडे, क्योंकि हाँ हाँ, फिर संडे के हिसाब से ना लोग थोड़ा अपने आप को फ्री रख के चलते हैं। संडे को डेफिनेटली। ना दिमाग में ऑलरेडी सबके आ जाता है कि अरे साला, मंडे, शिट, यू नो ये अब कुछ करने का सही मन में, नहीं है, तो वो वाली चीज है। But सही में, सही always, में। always great to talk to you and great to be here for the very first time. And of course, it's not gonna be the last time. ऑफ कोर्स भाई, मतलब आप भी, आप आपके चैनल में भी आप लाइक एनी टाइम जस्ट पिंग मी लाइक। अभी तो Definitely, bhai, सीजन definitely. सीजन सीजन अभी शुरू होने ही होगा। 43 डेज टू गो गाइस। 43 डेज टू गो फॉर द न्यू सीजन। ठीक है, ऑफिशियली, क्योंकि प्री सीजन गेम्स वगैरह होंगे, राइट? तब बहुत सारी चर्चा होगी, नए प्लेयर्स आएंगे एंड एवरीथिंग। पहले मैं थोड़ा कमेंट्स ले लेता हूँ, काफी कमेंट्स आए हुए हैं अभी। कृषानु इज हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कृषानु। दोज हु वांट टू जॉइन डिस्कॉर्ड, हाँ, तो अभी करंटली ट्विटर पे जो लोग देख रहे हैं, ट्विटर पे भी लाइव है राइट एट दिस पॉइंट, ट्विटर पे भी जो लोग देख रहे हैं, प्लीज ज्वाइन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब पे आई विल बी एबल टू टेक योर कमेंट्स। ठीक है, चैट ले सकता हूँ, कमेंट ले सकता हूँ। जो जो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर द सर्वर्स ऑलरेडी पिन्ड इन द चैट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यू कैन पिंग कृषानु हियर, he will be able to add you. Ram Bakshi, thank you so much for joining. I think first time आप हो इस channel पे, I think thank you so much for joining and hope you subscribe the channel. Matheus Kunya का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, if you haven't checked, please do check. Villain, hello from Nagaland, thanks for joining, thank you so much for joining. Hello भाई, अरे प्रतीक प्रतीक भाई, भाई in the house. thank you so much Pratik for joining. Yappers United, good evening. Absolutely, यहाँ गुड सारे इवनिंग, यहाँ सारे मेरे। पहचान वाले लोग दिख रहे हैं मेरे को सारे पहचान वाले लिख रहे, विच इज गुड टू सी। हाँ हाँ, नहीं, पहचान वाले बहुत बहुत आने वाले हैं अभी, होपफुली धीरे धीरे सब ज्वाइन करेंगे। मो इज हियर। मोबाइल। थैंक यू सो मच मो फॉर ज्वाइनिंग। मो के साथ भी करना है एक सेशन जल्दी। काफी बैंटर चल रहा था कल उनके चैनल पे। आशीष भाई, कंप्लीट बातें बोला करो, यहाँ की जनता बड़े गलत शब्दों में ले लेती है। मो के साथ करना है एक सेशन, वो कुछ और समझ जाएंगे। ठीक है, वो कंप्लीट बोला करो, फुटबॉल के रिगार्डिंग बात करनी है, फुटबॉल सेशन करना है। फुटबॉल बैंटर सेशन होगा, लेकिन लेजिट बैंटर हाँ, सेशन होगा, वो प्रॉपर बस। करेंगे मो के साथ। वरना मोबाइल भी लाइक मैंने कब एग्री किया भाई? फेयर मैं फेयर फेयर। शादीशुदा हूँ यार, मेरे हम्म। को ऐसे मत बोलो। आप आपके माइक का इशू है, फिर से आ रहा है एक बार। हाँ, हाँ, वो बोलिए फिर से थोड़ा एक बार। सा है वो। हाँ, हाँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी एकदम करेक्ट है। हम्म। हरवीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। टोटल 71 लोग देख रहे हैं फ्रॉम ट्विटर एंड यूट्यूब। जो जो ट्विटर पे हैं, हु इज जॉइनिंग फ्रॉम ट्विटर, प्लीज कम टू द यूट्यूब चैनल। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन इन द प्रोफाइल। सीधा यहाँ आ जाइए, सब्सक्राइब करिए। कम, विल टेक योर कमेंट्स, विल टेक ऑल द चैट्स, विल डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स टुडे। मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स प्रेजेंटेशंस बनाए हुए हैं। आज विल टॉक अबाउट गार्नाचो, राइट? बहुत बड़ा न्यूज है, राइट? आई मीन, आई थिंक इट वाज इनएविटेबल, बट बहुत बड़ा न्यूज है। एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द पोटेंशियल ट्रांसफर साइनिंग्स। रीबिल्ड हो रहा है, राइट? मैन यूनाइटेड 2.0 वर्जन, क्या होने वाला है नेक्स्ट? विल विल टेक अ लुक एट द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल। आई मीन, स्ट्राइकर्स की बातें तो बहुत हो रही है ना अंशुमन भाई, लेकिन आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम मिडफील्डर्स के बारे में बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और काफी सारी क्वेश्चंस है, आपके लिए भी क्वेश्चंस है, चैट के लिए भी क्वेश्चंस है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेशन, आज मजा आएगा। अभिषेक पड़ियारी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबका चैट ले ले, फिर फटाफट शुरू करते हैं। राहुल, राहुल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मैन, थैंक यू सो मच। काफी नए लोग जा रहे हैं आ रहे हैं आज। थैंक्स टू आपसे आपसे बहुत लोग आए हैं आज चैनल पे। यापस भाई, एब्सोल्युटली। प्रियांश इज हियर, थैंक यू सो मच प्रियांश। काफी हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत काफी बात किए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रियली अप्रिशिएट इट। सो विदाउट डिलेइंग मच, ठीक है,
विदाउट डिलेइंग मच आज पहले टॉपिक पे चलते हैं, राइट? पहले टॉपिक पे चल लेते हैं आज. दिस इज अ मैसिव न्यूज, राइट अंशुमन भाई? Garnacho, I think it was inevitable, right? कि Garnacho was about to leave after what has happened after the Europa League final, right? मतलब अब तो finally हो गया ये. But and just I'm just gonna summarize everything what has happened with Garnacho over the last season, right? One of the major stats is 14 missed big chances he has missed in the Premier League, and it's a big data, right? And उसी chance miss की वजह से there was a lot of frustration from the fans, right? And where did it go wrong, Anshuman bhai, with Garnacho this season? यहाँ पे इधर it ना, all comes down, yeah, it all comes down to the head. ठीक है. है ना? मैं एग्जांपल पहले भी दे दिया हूँ कि रोनाल्डो के कच्छे पहनने से रोनाल्डो बनने लगते ना, तो हम सारे रोनाल्डो होते. ठीक है, मैं भी Fair जाके enough. CR7 की चड्डी पहन के आ जाऊंगा और बैठ के यहाँ पे सूसू करूंगा दिन भर बैठ के. ठीक है, उससे होता नहीं है. यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर विथ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. Absolutely. कोई यूनाइटेड का फैन क्या, कोई राइवल का फैन भी ये नहीं बोलता कि गर्नाचो के पास पोटेंशियल नहीं है. बट Exactly. देन अगेन व्हेन यू लुक एट क्या पोटेंशियल को यूटिलाइज कैसे करो. यार पोटेंशियल पॉगमा में भी था, 30 साल की एज में डोपिंग के चक्कर में बाहर हो गया, करियर खत्म. पोटेंशियल Correct. राइवल मॉडिसन में भी था, खत्म. पोटेंशियल और बहुत सारे प्लेयर्स में था. राइट ठीक राइट. है, बेबे करके था एक प्लेयर, जब एलेक्स बहुत फर्गसन सारे लेके आया हैं. था, नहीं बहुत नहीं, सारे प्लेयर्स हैं. वो लिस्ट बहुत लंबी है. ठीक है, मैं Correct. तो एक रीसेंट एग्जांपल यूनाइटेड का दे रहा हूँ. डिपाई के पास बहुत पोटेंशियल था, 30-31 साल की उम्र में ब्राजील में खेल रहा है. ठीक है, तो बहुत सारे बंदे हैं. लेट्स दैट लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. जब आप एक चीज को सोच लेते हो, और स्पेशली जो आपके आसपास के अराउंड के जो लोग हैं, स्पेशली आपका जो भाई है, स्पेशली आपकी जो फैमिली है, जिनको लगता है कि भाई आपके अलावा दुनिया में कोई और फुटबॉल खेल ही नहीं सकता, दैट्स वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग. राइट. ठीक. एग्जैक्टली. व्हेन यू सी दैट अ न्यू मैनेजर इज कमिंग, ऑल यू हैव टू डू इज टॉक टू द मैनेजर कि भाई मेरा रोल क्या होगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो मैनेजर के आइडियोलॉजी में फिट होता है. बट देन अगेन यू हैव टू टॉक टू द मैनेजर कि भाई मेरा रोल क्या होगा. ठीक है, एंड करेक्ट. ही विल मेक यू अंडरस्टैंड द रोल. अगर आपको उसमें फुल ट्राई करो आप. अगर ये बोल देना है कि यार ये रोल तो मेरे से होगा नहीं, फिर तो ठीक है. फिर तो आपको साइड करो, निकाल दो. आपको राइट. पूरे सीजन में चांसेस मिले, आपको लेफ्ट पे चांस मिला, आपको राइट पे चांस मिला. हमें 1% का इंप्रूवमेंट नहीं दिखा इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग. है ठीक है, ना? 1% का इंप्रूवमेंट नहीं दिखा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजंस. एट टाइम्स यू डिड मेक द राइट डिसीजंस, बट दैट दोज डेज वर वेरी फार एंड फ्यू इन बिटवीन. करेक्ट. ठीक है ना, कि 2-3 हफ्ते में एक बारी अगर ढंग का क्रॉस दे दिया, या फिर अगर लेफ्ट की जगह राइट पे खिला रहा है, तो वहां पे अब आपके पास वो फुट है नहीं जो आप शूट करो, तो वहां से आप क्रॉस डाल रहे हो. राइट. मैं आपको दैट एग्जांपल वाज द दूंगा थिंग. अंशुमन. हाँ, एग्जैक्टली. एंड आपको एग्जांपल दूंगा, राइट? हमने, आई एम नॉट कंपेयरिंग प्लेयर्स एट दिस पॉइंट, बट एक एक जनरल फुटबॉल आईक्यू की बात होती है, राइट? यू टेक द एग्जांपल ऑफ द यूसीएल फाइनल उस दिन, राइट? उस दिन वो डेजिरे डुए जो पोजीशन पे था, राइट, तो फॉर द फर्स्ट गोल हकीमी वाली, अगर उस पोजीशन पे गर्नाचो होता, ही वुड हैव टेकन द शॉट. बट मैं नहीं. वो वहां पे भी नहीं जाऊंगा आशीष भाई. आई वोंट इवन गो ओवर देयर. मैं बात करूंगा जो प्लीज. गोल मारा था हॉयलैंड ने अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, जो राइट. अमाद का पास आया था. ठीक एग्जैक्टली. है, अमाद के पास बॉल गई, हॉयलैंड को पता था कहां खड़े होना है. गर्नाचो के पास बॉल आती है, हॉयलैंड को पता ही नहीं है कहां खड़े होना है. आई एम नॉट सेइंग कि हॉयलैंड कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, बट राइट. ही हैज दिस विथ अमाद. उसको पता है अमाद क्रॉस डालेगा, एग्जैक्टली. अमाद पास करेगा. उसको करेक्ट. पता है गर्नाचो नहीं करेगा. और राइट. उसको क्या, पूरी की पूरी सामने वाली टीम उसको पता है कि गर्नाचो नहीं करेगा. राइट. ठीक है, वो बॉल लेके भाग सकता है, बट उसका एंड प्रोडक्ट, ठीक है, वंस इन 50 शॉट लोगे एक वंडर गोल आ ही जाएगा यार. एग्जैक्टली. 60-70 शॉट लोगे एक कर्लर घुस ही जाएगा अंदर. राइट. ठीक है, सो दैट्स नॉट. ठीक है, एज यू कैन सी 26 गोल्स, 22 असिस्ट, द नंबर्स आर नॉट बैड. वही वही. इट्स जस्ट कोई डालो को लेके हल्ला मचाता है क्या, डालो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं है डालो से. हल्ला वहां मचता है जहां पे प्लेयर से उम्मीद होती है. ठीक है, अब इसके साथ उम्मीद थी, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड कि भाई इसका करियर यूनाइटेड में इतना जल्दी शॉर्ट हो गया. राइट. ठीक राइट. है, राइट. बिकॉज एवरीबडी वांटेड हिम टू बी देयर. एवरीबडी वांटेड हिम टू बी द नेक्स्ट गाय हु विल टेक एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, एब्सोल्युटली. बट एब्सोल्युटली. इसको लगा कि बस मेरे को जो करना था वो इतना ही करना था, एंड दैट इज मोर देन अनफ, मोर देन सफिशिएंट. तो भाई बीच ग्राउंड में खड़े करके अमरीम ने बोल दिया कि भाई नया टीम ढूंढ ले. ठीक है, राइट. अब राइट. जा, आप देखते हैं हु गेट्स हिम. एब्सोल्युटली.
Absolutely. तो comments ले लेते हैं. Subhajit बोला legendary collab. Thank you so much for joining. Ashok has also joined. Thank you for joining. Thank you so much for coming for the first time in the channel. जो Twitter पे अभी भी देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं Twitter पे, सब YouTube पे आ जाओ प्लीज. सब YouTube पे आ जाओ, सबका कमेंट्स ले सकते हैं. बर्फी बोल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट विक्टर ग्योकेरेस वगैरह पे आएंगे. आई थिंक आज का टॉपिक बहुत बर्फी इज अ डिल्यूशनल आर्सेनल फैन, उसको नहीं भी लोगे उसका कमेंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक डेफिनेटली है. ऐसा कुछ नहीं, ले लेंगे सबका कमेंट्स, सबकी बातें हाँ. लेंगे. धनंजय बोल रहे हैं, आओ धनंजय वो फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. जो नए नए आए हैं आज चैट पे, रियली रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. होप यू चेक आउट माय कंटेंट. अगर आपको अच्छा लगा तब सब्सक्राइब करना, कोई लोड नहीं है, ठीक है. एंड या आई मीन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, गर्नाचो का क्या सीन हुआ, राइट? आई मीन एट जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, राइट? एट जस्ट 20 ईयर ओल्ड आपका कितना, आपका ईगो हाई हो सकता है एट दिस पॉइंट जब आपकी ग्रोथ स्टेज हो, राइट? इट्स ऑल कम्स डाउन टू द मेंटालिटी. आई गिव एन एग्जांपल. सम ऑफ द यंग प्लेयर्स ऑफ द, मैं पास पे नहीं जाना चाहता, बट आप देख लीजिए जॉन ओशे, वेस ब्राउन, राइट? आपके डैरेन फ्लेचर देख लीजिए. दीज प्लेयर्स आपके एबिलिटीज लिमिटेड थे, बट मेंटालिटी वैसी थी ना कि दे यूज्ड टू एनीवेज आउट परफॉर्म द बेस्ट प्लेयर्स इन द लीग. क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन, मेंटालिटी और वो एक, आप यूथ हो, एक ग्रो करने की आपकी एक जो क्षमता होती है ना, दैट यू नीड टू होन योर स्किल्स ऑन. अब गार्नाचो अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर समझने लगा एट द एज ऑफ 20 इयर्स, राइट? लाइक व्हेन आप एग्जांपल देता हूं आपको, राइट? इन मोस्ट ऑफ द गेम्स जब डॉर्गू नया नया आया था, राइट? व्हेन डॉर्गू हैड कम, डॉर्गू इतने रन्स बना रहा था लेफ्ट पे, गार्नाचो एक भी उसको पास नहीं देना है उसको. एंड दैट यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस. एंड ऑब्वियसली द हेट इज लेजिट, बट एक डिस्कॉर्स दूसरी तरफ ये है कि ही इज ओनली 20. क्या उसको चांस देना चाहिए था फॉर अ फुल रीबिल्ड सीजन अंडर एमरिम? बट बात ये भी है कि डज ही एक्चुअली फिट द प्रोफाइल एट यूनाइटेड? उस पे आपको क्या कहना है? मतलब मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं, खेल रहा हूं यहाँ पे. हाँ, मैं किसी को भी चांस देने को तैयार हूं जो कि क्लब के लिए खेलने को तैयार है. ठीक है, जो नखरे करने को बैठा हो रेडी, मैं उसको मैं चांस नहीं दूंगा. आई हैव बीन सेइंग दिस. मैंने इसके बिफोर इट वाज एब्सोल्युटली कंफर्म्ड कि वो लीव कर रहा है. आई सेड दैट 20 साल का बंदा है, मैं इसको 1 साल और दूंगा एटलीस्ट विद द मैनेजर. बट राइट. अगर आप ऐसी हरकतें करोगे जहां पे यू आर लाइक कि मैनेजर जो बात कर रहा है, आप मैनेजर को कॉल आउट कर रहे हो बिना राइट. बात सुने हुए. मैनेजर के अगेंस्ट जो पोस्ट आ रहे हैं, आप उसको लाइक करे जा रहे हो. मतलब दैट इज ब्रेन डेड. दैट इज ईगोइस्टिक. जो बोलते हैं ना, वो अलग लेवल का ईगोइस्टिक है वो. एब्सोल्युटली. एंड ठीक है. तो न्यूज़ लीक्स भी तो आते थे कितने, राइट? अब अराउंड द टीम न्यूज़ हो नहीं, गए, न्यूज लीक्स पे तो मैं नहीं जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. न्यूज लीक्स आज से नहीं आ रहे हैं. गर्नाचो जब चड्डी पहन के अंडर 15 खेल रहा था ना, अंडर 16 यूनाइटेड के लिए, तब तब से से भी आ न्यूज रहे हैं. लीक आ रहे हैं. ठीक है. फेयर कि इनफ. कोई कभी आता है तो ज्यादा हो जाता है, कोई कभी आता है कम हो जाता है. वो अपने हिसाब से चलाने वाले हैं. ठीक है. जिसको जो मन करता है वो अपने हिसाब से लिख देता है. ठीक है. तो वही वाली बात है कि इसके साथ एक्सपेक्टेशंस थी, इसलिए लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा है. बट द थिंग इज, इफ नोबडी, if you don't want to perform for the manager, you should. एंड मैनेजर भी क्या यार, तुम्हें तो अपने क्लब से मतलब होना चाहिए ना. राइट. मैनेजर ने बोला ये सिस्टम है, आपको बोलना चाहिए ठीक है, आई विल वर्क हार्ड. ये होता कि मैनेजर आपको, जैसे अमाद के केस में एंड में, एरिक टेन हाग, ही वाज टोटली पुटिंग अमाद आउट ऑफ द स्क्वाड. ठीक एब्सोल्युटली. है. मतलब वो एक तरीके से एजेंडा दिख रहा था वहां पे. तो इफ मैनेजर हैज एन एजेंडा अगेंस्ट यू, देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट. आपको तो पूरा सीजन खिला दिया मैनेजर ने. और राइट. 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 मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप लेफ्ट पे खेले जहां पे आपको प्रेफर करते हो आप, क्योंकि वहां पे आपके लिए कोई उस तरीके से सामने से कोई कंपटीशन ही नहीं था. रैशफोर्ड भी जा चुका था. एब्सोल्युटली. ठीक है. तो आप तो अपने जगह पे खेले हो, फिर भी आपका, ठीक है, गोल असिस्ट का रेशियो अगर आप बोलोगे तो भाई ठीक है, इतने कर दिए यमाल डुए एंड इसके बाद. बट भाई तुम ये भी तो देखो कि उसके अलावा वो कितने चांसेस मिस करके आ रहा है. राइट. और जब लोग बात करते हैं कि भाई 20 का है तो भाई टॉप लेवल पे खेलते हुए भी तो 2 साल हो गए. एग्जैक्टली, 2 साल बात से वही तो ये है. फर्स्ट टीम का प्लेयर है. एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट. एंड मैंने एक कोट में सबको याद दिलाना चाहता हूँ, व्हेन मोरिनियो हैड सेड स्काई स्पोर्ट्स या टीएनटी या बीटी पे, राइट? इफ यू आर गुड एनफ, यू आर ओल्ड एनफ, राइट? अगर आपको वो मिल चुका है दैट प्लेटफॉर्म टू प्ले 2 फुल सीजन्स, यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एनफ. आपको उसके एग्जैक्टली. बाद कोई रूम नहीं है कि आप वो प्रोजेक्ट प्लेयर हो. यू आर वे पास दैट प्रोजेक्ट प्लेयर मोड ऑलरेडी, एग्जैक्टली. है ना? अभी हमारे जो प्रोजेक्ट प्लेयर्स है, दे आर थ्वाइट, दे आर फ्लेचर ब्रदर्स, दे आर कुकोंकी.
you know, the लेसी हो likes गया. of हाँ लेसी, these are the upcoming players जो आप बोल सकते हो once in a while टीम के साथ ट्रेन करते हैं, they're part of project. आप 2 साल में ऑलमोस्ट 100 गेम्स खेल चुके हो यार यूनाइटेड के लिए, एंड देन इफ यू एक्ट लाइक दिस, तो वही है, ठीक है जाना है अब जाने दो, एज आई सेड जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, एंड जब खुद से उसको जाना है, वी विल सी हु टेक्स गर्नाचो एंड ऑल बाद में, बट हाँ इसके ऊपर वही है, मैं ये सब नहीं बोलने वाला गुड रिडेंस एंड ऑल दैट, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड हिम टू सक्सीड एंड आई वांट ऑल आवर यंग प्लेयर्स टू सक्सीड, बट अगर वो यंग प्लेयर के दिमाग में ये आ जाए कि भाई स्किल सेट हो तुम्हारा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओडेगार्ड लेवल, और तुम बात करो कि भाई मैं हूं पॉल स्कोल्स, राइट तो फिर उसका कोई जवाब है ही नहीं. इट्स राइट लाइक राइट. मैं अपने चैनल पे बैठ के बोलूं कि यार मैं तो मिस्टर बीस से बड़ा हूं, ठीक है, तो इस डिलीजन का क्या जवाब है, ठीक है, तो एब्सोल्युटली. उसका उसका कुछ फायदा है नहीं. राइट राइट राइट. एंड आई थिंक अब जब बात आई गई है कि सेल की बात, राइट, जब सेल की बात आई गई है, वैल्यूएशन, आई मीन अभी इस सीजन, राइट, लास्ट सीजन हाउ यूनाइटेड फिनिश्ड, ऑब्वियसली सारी प्लेयर्स की वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 10% डाउन हुई है, राइट, वो होती है, लाइक वी ओवरऑल मार्केट वैल्यू के हिसाब से, राइट. मेरा एक सवाल है आपसे, लाइक डिड वी लूज आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली सेल गार्नाचो जनवरी पे, व्हेन जब स्टेक्स हाई थे, यू रिमेंबर द वैल्यूएशन 60 मिलियन तक जा रही थी उस टाइम पे. अब नहीं, वैल्यूएशन उस टाइम ऑब्वियसली पे कम भी हो. हम 60 मांग रहे थे, जा नहीं रही थी, जा हाँ नहीं हाँ. रही थी 60, हम राइट मांग रहे थे, हम अभी भी 50 मांग रहे हैं, बट कोई देगा नहीं. आई थिंक 40 to 45, नेपोली पहले 45 देने को रेडी थी, अब वो भी 40 के ऊपर नहीं देगी, बिकॉज नाउ दे नो दैट दे हैव अ फॉल आउट, ठीक राइट है, राइट इसको राइट निकालना है क्लब को, बट देन अगेन वी आर ऑल्सो नॉट इन द रश, क्योंकि हमने गर्नाचो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, राइट ठीक राइट है, राइट. हमने गर्नाचो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाई आई से कि 40 अगर मिल जाते हैं, एक्चुअली मैं तो ट्राई करूंगा कि भाई 45 मिल जाए, ठीक है, राइट मतलब राइट. या तो आप 40+10 एड ऑन्स में जाओ, या फिर आप 40 में बेच दो, ठीक है, विथ अ क्लब लाइक नेपोली, एंड उसमें फिर सेल ऑन क्लॉज डाल दो, ठीक है, एब्सोल्युटली. नेपोली के साथ आप नेपोली के साथ ये कर सकते हो, बिकॉज पैसा थोड़ा कम दे रहे हैं वो, ठीक, तो आप 40+ सेल ऑन क्लॉज डाल सकते हो, ठीक, अगर राइट नेपोली, क्योंकि नेपोली ऑल्सो सेल्स, अगर उनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो वो और ज्यादा पैसा बढ़ा के बेच देते हैं इन राइट. फ्यूचर, अगर गर्नाचो 4 साल 5 साल बाद जाता है, एंड इफ वी हैव अ 20-25% क्लॉज, ठीक है, तो प्रॉफिट पे जितना आता है उतना ले लो, फेयर एनफ. बट मेरे हिसाब से 45 का पैकेज इसका मिल जाएगा. आई मीन अगर प्रीमियर लीग, हाँ, और फिर लोग बात करते हैं भाई प्रीमियर लीग में, तो भाई गर्नाचो का ईगो, मैं ये कल ही बात कर रहा था, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम अगो, मैं कल हाँ. बात कर रहा था कि भाई ये बोलेगा मुझे यूसीएल चाहिए, ठीक है, आप नखरे कम नहीं है ना, एग्जैक्टली. नखरे कम नहीं है, मुझे ये हाँ. बोलेगा मुझे यूसीएल चाहिए, तो इसी वजह से एस्टन विला है नहीं, और ही वांट्स टू बी द मेन मैन, ठीक है, तो आप आर्सेनल भी हटा दो, आर्सेनल में ठीक है, चांस ही नहीं, आर्सेनल पे उस पे. आर्सेनल का चांस नहीं, आर्सेनल को तो हम पहली बात देंगे भी नहीं, और आर्सेनल का ये है कि मुझे नहीं लगता ये खुद जाएगा, क्योंकि इसको दिख रहा है कि वो वहां पे मेन मैन नहीं बनेगा, राइट मेन मैन एक ही जगह पे बनेगा ये, और वो है नेपोली, नेपोली राइट. में विंगर्स नहीं है, दे डोंट हैव क्वालिटी विंगर्स, हाफ हार्टेड विंगर्स हैं, नाउ दैट कॉन्टे इज स्टेइंग, और कॉन्टे ही इसके पीछे पड़ा था जनवरी में, तो मुझे लगता है कि कॉन्टे जो है इसको उठा ले जाएगा, सो आई थिंक नेपोली कैन बी अ गुड डील, एंड राइट. आई थिंक हमें जल्दी करना चाहिए, बहुत ही ठीक जल्दी है, करना एटलीस्ट चाहिए. हाँ हाँ. जितनी जल्दी आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि वो प्योर प्रॉफिट का, जब आपका एक प्लेयर आ जाएगा ना, एक प्लेयर सेल हो जाएगा, तो आपके ऊपर से एक बर्डन हट जाएगा, ठीक है, आप फेयर. 40 में बेचो, 45 में बेचो, ट्राई आप ऊपर जितना करो, आप बिक जाए, बट नेपोली जैसे क्लब में आप एड ऑन देके 50 तक ले जा सकते हो, आराम से 50 ले जा सकते, कंसीडरिंग दे हैव क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग, एंड एंड दे मैंने हैव ओसीमैन मनी, दे हैव ओसीमैन मनी, एग्जैक्टली ओसीमैन मनी. उनको, अब हाँ, और ओसीमैन मनी वैसी मनी नहीं है कि यूरोपियन क्लब्स खरीद रही है, हाँ, सऊदी खरीद रहा है, तो काफी एक बार पैसा में आने वाला पैसा, है. हाँ. 75 मिलियन एक बारी में बैंक में डलेगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली. इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात नहीं करती है, एग्जैक्टली. कोई पीएसआर हैंग नहीं कर रहा है, हाँ, गले पे कोई लटक नहीं रहा है, एवरीथिंग इज बिल्कुल गोइंग कुछ नहीं, एब्सोल्युटली पर प्लान. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हम्म, अब मैंने अब अपने बहुत सारे वीडियोस पे बात भी करी है अबाउट द रेवेन्यूज दैट टीम्स जनरेट थ्रू जस्ट बाय बीइंग देयर इन द यूसीएल. आप यू जस्ट नेपोली जस्ट बाय बीइंग देयर इन द यूसीएल, राइट, दे विल गेट 80 टू क्लोज टू 100 मिलियन यूरोज रेवेन्यू में. तो उन लोग वो रिकूप कर लेंगे, वॉट एवर द इन्वेस्ट इन द ट्रांसफर विंडो, दे विल रिकूप. एंड ऑब्वियसली एंड और एक बढ़िया पॉइंट है, आई थिंक राइट नाउ प्रियांश ने इज मेंशनिंग, राइट, क्वारा का सेल भी आया था, राइट,
क्वारास का सेल के 60 million. एग्जैक्टली. सो उन लोग का काफी व्हाटएवर दे नीड द फॉर्मूला दे हैव टू टू विन द सीरीज उनके पास है. दे विल जस्ट अपग्रेड राइट नाउ एट दिस पॉइंट क्योंकि सेल्स उनसे ज्यादा है. I think they got very lucky with the, Syria. With all due respect to them, they got very lucky with Syria. इस सीजन ठीक के है. सीरीज और आप बोल रहे हो कि यूवेंटस वगैरह इसने compete नहीं की. नहीं नहीं, compete करने की बात नहीं. लकी इन द सेंस कि विनिंग. आई एम नॉट सेइंग कि दे परफॉर्म्ड बैडली, बट दे डिड. अगर ये नॉर्मल सीजन, आई एम नॉट सेइंग कि भाई इनका मैं क्रेडिट ले रहा हूँ. करेक्ट ऑल आई एम सेइंग इज कि अदर्स का रिजल्ट एट द लास्ट मोमेंट दे फक्ड इट अप. हाँ हाँ. ये तो पूरा इंटर फक्ड इट अप. ये तो फुल ऑन फक्ड अप कर रहे थे. ठीक है. लास्ट में प्रेशर वाज ऑन नेपोली एंड नेपोली वी आर एब्सोल्युटली शैटर्ड. ठीक है. वो तो एंड में यूसीएल के चक्कर में इंटर का ध्यान भटका या जो भी बोलो. दे ऑल्सो एंडेड अप ड्रॉपिंग पॉइंट्स एंड एंडेड अप गिविंग द टाइटल टू. बट ये अगर ऐसा परफॉर्म नेक्स्ट सीजन करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता दे विल एंड अप विनिंग द टाइटल. एंड कॉन्टे ऑलवेज थ्राइव्स ऑन हैविंग अ स्क्वाड जो कि जाके टाइटल जीते. हाँ हाँ. He has a proven record, right? 7 या 8 टाइटल जीता है उसने, right? That's why he wanted to move out. क्योंकि भाई वो बोल रहा था या तो पैसे खर्चा करो भाई, या तो मेरे को मेरे हिसाब से स्क्वाड बना के दो, अदरवाइज मैं चला. ठीक है. तो नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया भाई ने. ठीक है. दे हैव द मनी एज वेल. यूसीएल का पैसा, सुरेटो जीतने का पैसा, आपका कवारास्टेलिया का सेल करने का पैसा, ओसीमेन को सेल करने का पैसा. ठीक है. सो दे हैव लॉट ऑफ मनी. बट ये भिखारी अभी यूनाइटेड के पास आएंगे और बोलेंगे मैं गरीब. हाँ, वही वही तो सीन है. एंड और मैं गरीब हूँ. हाँ, और एक क्लब यहाँ पे डेफिनेटली एक जा सकती है. एंड आई थिंक देयर इज अ चांस एंड इट्स कॉल्ड बायर लेवरक्यूजन विद एरिक टेन हाग. और ये लेजिट अपॉर्चुनिटी है. आई एम प्रीटी श्योर एरिक टेन हाग. सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एरिक टेन हाग वाज द वन हु गेव गार्नाचो फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटी. बीट कोई भी सिचुएशन हो, एडवर्सिटी थी, रैशफोर्ड का फॉर्म खराब था, व्हाटएवर इट इज, बट गार्नाचो को चांस मिला. ही वाज इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्वाड प्रीटी क्विकली एंड फेयर एनफ टू ईटीएच. सो ये चांस हो सकता है कि we might have an opportunity to sell Bayer Leverkusen अगर वर्ड्स का साइनिंग हो जाता है, which will happen. Bayer 100% वो तो हो जाएगा. वो तो 100% मैंने तो वीडियो भी बना दी है भाई उसके लिए. तो वो होने वाला. तो उससे जो पैसा आएगा, राइट, ETH will obviously try to get Garnacho back and Garnacho might be successful in Bundesliga. He will tear apart Bundesliga. He will tear apart Bundesliga. वो सांचो जैसे नंबर्स प्रोड्यूस कर देगा बुंडेसलीगा में. हाँ, और फिर हाइंडसाइट आई एम नॉट जोकिंग. वही तो बोल रहा हूँ. मतलब और हाइंडसाइट पे क्या, और यूनाइटेड फैंस मतलब है हमारे में है. वो हर फैन बेस में है. हर फैन बेस में है. वो हर जब यहाँ पे मैकटोमिने था तो गाली दे रहे थे. राइट. ठीक है. वहां जाके प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया तो अब मैकटोमिने को मतलब अपने नीज पे आके सब कुछ करने को तैयार है. ठीक है. क्या रे भाई मैकटोमिने. हाँ बोला तू ही तो साले गाली देता था दिन भर बैठ के. बिकॉज मैकफ्रेड जब होते थे, फ्रेड एंड मैकटोमिने, ये कौन सी सेंट्रल मिडफील्ड है. बट अब हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं कि ओले को इतनी गालियां दी लोगों ने जस्ट बिकॉज़ ही यूज्ड टू प्ले मैकफ्रेड. अरे उसके पास तो ऑप्शन भी नहीं था. और ओले यूज्ड टू प्ले द मोस्ट एंटरटेनिंग फुटबॉल ओवर द पास्ट 4-5 इयर्स. आप उठा के ले लो भाई. ठीक है. दैट्स अनदर डिस्कशन, एक और स्टोरी है. एग्जैक्टली. राइट. अब एंटनी वाला सिचुएशन भी है, राइट. लाइक ये सिचुएशन भी एक है कि ही हैड अ फैंटास्टिक 85 मिलियन डबल डील. 85 मिलियन में डबल डील फॉर टेन हाग. ठीक है. अपने दोनों बच्चे उठा लो, एंटनी और गर्नाचो. एक राइट पे खेलेगा, एक लेफ्ट पे खेलेगा. तुम्हारा दोनों विंग सॉर्टेड. और तुम्हारे को 85 से ज्यादा हम नहीं मांग रहे हैं. 85 मिलियन यूरोज. एक के 45, एंटनी के 40. राइट. दैट्स इट. टोटल 190 पीपल देख रहे हैं ओवरऑल ट्विटर एंड यूट्यूब मिला के. जो ट्विटर पे हैं, whoever is watching from Twitter, there's lot of things to discuss tonight with Anshuman. Fantastic session होने वाला है. I have so this ये तो गानाचो वाला टॉपिक है. The next topic we're going to switch to is the actual rebuild. And strikers की बहुत सारी बातें हो रही है, but I think we need to talk about the midfield. Midfield एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारा मिसिंग रहा है काफी 2-3 सीजन से. We'll talk about it. Whoever is watching from Twitter, please come and join on the YouTube channel. I will be able to take your comments and Discord link भी है. Whoever wants to join, Krishano is here as a mod. वो ऐड करेगा आप लोग को. The link is also pinned on the chat comments. अब देखिए, एक फाइनल कॉल तो देखिए ले सकते हैं कि गार्नाचो डेफिनेटली इज गोइंग, राइट. सो
Yeah, obviously he's done. हाँ तो और He's done. he's not gonna fit in the system. Let's be absolutely honest. He's not that L10 or R10 that we thought he would be. वो नहीं हो सकता. He is completely a वो winger profile में है. He's not gonna be successful in Amorim system. आपका what's your final prediction on where Garnacho is gonna go? Prediction दे I दो. still feel Napoli. नेपोली ना मुझे भी वही लग रहा है हाँ रियलिस्टिकली नेपोली ही लग रहा है मुझे बिकॉज नेपोली नीड्स दैट डायनेमिक विंगर और वो सीरिया में फाड़ देगा वो भाई वो फाड़ हाँ, देगा एक सीरिया में सेकंड भाई, कॉल आ रहा है, कंटिन्यू करो, मैं absolutely absolutely and सीरिया में absolutely Garnacho will kill it the reason is the he's very dynamic in the way he performs right वो घुसता भी अंदर है and under Conte I think he can actually flourish क्योंकि ही कॉन्टे का एक रिकॉर्ड रहा है कि he has even you know आपका पोटेंशियल इंक्रीज करने की बात होती है राइट प्लेयर्स की विक्टर मोजेस को लेके उसने प्रीमियर लीग जीता था भाई एट राइट बैक सो we are talking about those managers he's going to play for I think but एक second situation आ सकता है that he might go to Bayer Leverkusen and that's one of the I think major uh, अगर ETH उठा के ले जाए so Bayer Leverkusen definitely will spend and Garnacho will fit there I think it's time कि but with this Garnacho sale right with this Garnacho sale one of the most important things that will happen is the money we're gonna get and मैं PSR वाली बात last पे आऊंगा I'll show a graph as well and Anshuman bhai already has talked a lot about PSR we'll do a discussion on that as well कि इतना वाइटल है गानाचो का सेल at this point कि first of all सिस्टम में फिट नहीं होता and if we sell him we can actually use that funds to get a midfielder a decent midfielder we'll talk about it आगे जाके पहले I'll take some comments अंशु भाई आपको नहीं लगता गानाचो के लिए बहुत कम होगा 45 मिलियन पाल्मर ना कुछ नहीं किया उसको सिटी ने 45 मिलियन पे बेचा था यार देखो, एक चीज सिंपल है, फॉल आउट है हमारा, पहली बात तो। और राइट हमारा मार्केट में जो रिपुटेशन है 15 साल का, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। ठीक है। सो एज आई सेड कि ये टॉपिक पे जो है ना, आप 2 घंटे भी बात करोगे तो वो टॉपिक कम ही पड़ेगा कि भाई ये जस्टिफाइड है नहीं है जस्टिफाइड, हम इतना कम क्यों मांग रहे हैं। दो राइट रीजन है कम मांगने के, प्लेयर आपके साथ खेलना नहीं चाहता, आप प्लेयर को खिलाना नहीं चाहते, इसके अलावा और कोई रीजन चाहिए नहीं। एग्जैक्टली ठीक है। ठीक, तो गर्नाचो गर्नाचो भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसके 40-45 मिल गए, एंड एज आई सेड कि अगर थोड़ा सेल ऑन क्लॉज लग गया, आई विल बी फाइन। सेल ऑन क्लॉज नहीं भी लगता है, देन यू कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स, क्योंकि सामने वाले को पता है आपको पैसा चाहिए, यू नो एंड यू नीड दैट प्योर प्रॉफिट एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जल्दबाजी में हमें इसको निकालना पड़ेगा। जो स्क्वाड में नहीं रुकने वाला उसको जल्दी से खत्म करो। प्री सीजन के ठीक है। पहले लेना ही नहीं है इसको प्री सीजन हाँ तक लेना ही नहीं है इसको एब्सोल्युटली डज नॉट मेक सेंस कि आप इस प्लेयर को लेके जाइए पूरे स्क्वाड पे और एक माहौल आप खराब करते हो राइट स्क्वाड में जब पूरा फ्रेश हाँ रीबिल्ड शुरू हो रहा है राइट अंडर अ प्री सीजन तो उससे अच्छा आप मतलब अपने लेसी वगैरह दे विल गेट मोर चांसेस टू प्ले अब वही अभी गार्नाचो को खिलाना पड़ेगा इफ दे डोंट सेल बिकॉज आपको प्लेयर फिटनेस बढ़ानी है आपको प्लेयर वैल्यू और बढ़ानी है तो प्री सीजन आप खिलाओगे उसको अननेसेसरली यही सब होने वाला है आई थिंक इट्स फेयर इनफ दैट वी नीड टू सेल हिम सून एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। ना सो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि वेयर अभी द रीबिल्ड स्टार्टिंग राइट आई मीन देयर इज लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट स्ट्राइकर्स कि ग्योकरेस आएगा नहीं आएगा ओसिमैन आएगा लेट्स नॉट गो देयर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं उस पर कि क्या है सिचुएशन ग्योकरेस हम लोग बात में आएंगे बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि the one complaint that all United fans had over the years कि हमारा midfield is non-existent and क्यों non-existent है because some of the players some of the midfielders we have today they get absolutely overloaded with like वो प्रेस बीट नहीं कर पाते राइट दे कांट बीट प्रेस टेक्निकल एबिलिटी नहीं है कि वो प्रेस बीट करके पास गेम डिक्टेट कर सके टेम्पो में तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे मिडफील्डर ऑप्शंस क्या है अगर गार्नाचो सेल होता है मेरा सवाल है आपसे ये है अंशुमन भाई राइट नाउ विद एवरीथिंग दैट वी हैव विद एम्बुएमो डील गोइंग ऑन विद एंड कुनिया ऑलरेडी सील हो चुका है would you rather invest the money in a central midfielder right now or you will go all out for a striker at this point नाइदर। neither सेंटर बैक और विंग बैक चाहिए मुझे। आपको सेंटर बैक और एक विंग बैक चाहिए ओके पहले भी फेयर बोल एनफ चुका हूं मैं, ओके स्ट्राइकर हम वैसे भी ले आएंगे। 3 बंदे, क्योंकि द डील्स दैट वी आर डूइंग वी आर पेइंग इन 3 years 4 years। ठीक है। और मैंने पीएसआर के वीडियो में समझाया था कि हाउ वी आर गोइंग टू अफोर्ड दोस डील्स, तो इट्स राइट नॉट अ प्रॉब्लम। बिना राइट सेल करे भी हम 3 बंदे ला सकते हैं। आप जब
पे करते हो रिलीज क्लॉज, ठीक है, हम कुनिया के डील में 20 मिलियन दे रहे हैं पर ईयर, फेयर, ठीक है, सही, हम एम्बुएमो के डील में 15 मिलियन दे रहे हैं पर ईयर, 15 टू एब्सोल्युटली, 15 हाँ, मिलियन ठीक, 35 हुआ। अगर हम गेकोरेश भी ले आते हैं, 3 साल में भी उसका पैसा देते हैं 60 मिलियन, तो भाई 20 मिलियन का पड़ेगा, राइट, ठीक, तो दैट इज 55 मिलियन। हमारे पास 100 मिलियन प्लस सेल्स है टू स्पेंड, हाँ, ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू इस सिस्टम के अंदर। अगर हमारे पास सेंटर बैक्स और विंग बैक्स ढंग के नहीं है, तो आप आगे कितना भी शोर कूद उछल कूद मचा लो, अगर आपका पीछे से गेम ढंग का नहीं बन रहा, इट्स नॉट गोना हैपन, राइट, ठीक। बात रही मिडफील्ड में, हमारे ऑप्शंस वैसे भी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी रियलिस्टिक। मेरे पास जो मिडफील्डर्स हैं, और आई वांट एक्चुअली एमरिम टू डू बेटर विद देम, ठीक है, अगर आप हर जगह पे 60-60 मिलियन के प्लेयर लिए बिना अगर आप बोल रहे हो कि मेरे से स्क्वाड ही नहीं बनेगा, देन यू आर नॉट दैट गुड ऑफ अ मैनेजर दैट वी थिंक यू आर, ठीक फेयर है। इनफ, इफ यू एब्सोल्युटली, हैव इफ यू हैव द लाइक्स ऑफ यू नो क्या बोलते हैं, अकेडमी से आपके पास इतने ब्राइट टैलेंट्स है, तो अगर यू रेट देम सो हाईली, और अगर आप उसको खिलाने के मूड में ही नहीं हो, बिकॉज राइट, व्हेन यू लुक एट द फ्लेचर ब्रदर्स, ठीक है, हाँ, दे आर फिजिकली रेडी। जो हाँ, बंदे फिजिकली रेडी नहीं होते हैं उनके लिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, व्हेन यू लुक एट मूड हाउस, ही लुक्स फिजिकली रेडी, आप ठीक है। सेको कोने ले लीजिए, सेको कोने भी है, सेकू कोने टेक्निकल बहुत ज्यादा है, बट अगर आप उसको डीएम वाले रोल में खिलाओगे, ही नीड टू बिल्ड अप अ बिट मोर मसल। आप राइट, कोबी मैनू को देख लो, अभी मसल बिल्ड कर कोबी रहा है मैनू, वो, धीरे-धीरे, एग्जैक्टली, जस्ट लुक एट कोबी, जिस तरीके से वो मसल बिल्ड करके आया, सो वो तो चेंज इफ दिख यू रहा है, हैव इफ हाँ, नाउ दैट यू हैव ऑप्शन जहां पे आपके पास प्लेयर्स वर्सेटाइल है, ठीक है, यू आर लुकिंग एट अ ब्रूनो एंड उगाटे का पिवट, ठीक है, हाँ, फॉर द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उस रोल से, ठीक है, अच्छा, ब्रूनो के, राइट, बिकॉज अब हमारे पास नंबर 10 वैसे हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं, जो स्कोर राइट, कर सकते हैं, जिनका डिफेंसिव वर्क रेट बहुत तगड़ा है। राइट, तो ब्रूनो के ऊपर तलवार नहीं लटकी होएगी कि उसको हर जगह जाके और हर किसी के लिए क्रिएट करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट करना है, फेयर, फेयर, ठीक है। नाउ ही कैन गिव दैट डिफेंसिव वर्क रेट जो एंड ऑफ द लास्ट 2-3 साल में जैसे रूनी करता था, ठीक है, कि जब मन हुआ तो थोड़ा ड्रॉप इन डीप हो गया, जब राइट, मन हुआ तो थोड़ा सा आगे आ गया, तो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट लुक फॉर दैट डायगोनल और दैट फर्स्ट अर्ली पास, बट राइट, जैसे अगर आप पहले 10 ट्राई कर रहे थे, 4 भी ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बिकॉज कुनिया एम्बुएमो अमा दीज आर द गाइज हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। फेयर, लोग फेयर, बात करेंगे एडरसन, एडरसन भाई 60 मिलियन से कम में आएगा नहीं, 60 मिलियन हम देंगे नहीं। फिर बात करेंगे लोग ओनाना की, ओनाना के 75 मिलियन मांग देगी एस्टन विला मुंह फाड़ के, 50 राइट, उन्होंने खुद ही दिए हैं, राइट, ठीक है। राइट, तो राइट, आई डोंट टॉक अबाउट रियलिस्टिक ऑप्शंस, और चलिए इंग्लिश फिर, मीडिया जिनके साथ लिंक करती है उसके साथ अगर मैं बात करने बैठूंगा तो भाई हर दिन मुझे 6 घंटे का स्ट्रीम करना पड़ेगा, क्योंकि 60 प्लेयर के साथ इंग्लिश मीडिया हर दिन लिंक करती है। एंड दिस इज वेयर देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे पास, सो आई अंडरस्टैंड ये पॉइंट। उस पे मेरा पॉइंट ये है कि एट दिस पॉइंट कि जब मैं 2 साल से देख रहा हूँ, राइट, जब हम कंट्रोल लूज करते हैं गेम पे, राइट, मुझे मेरी मेरी ओपिनियन ये है कि ब्रूनो एट दैट पिवट विल फेल, एंड हैज विल फेल, क्योंकि उस ही टेंड्स टू लूज द बॉल अ लॉट, राइट, वो है, इट्स अ फैक्ट, तभी मैंने बोला हाँ, दैट ही लूजेस द बॉल बिकॉज ही ट्राइज अ लॉट। ही ट्राइज अ लॉट, लेकिन लेकिन बात ये है ना, इस फॉर्मेशन पे कंट्रोल चाहिए आपको, अगर चाहिए तो आपको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए को जो प्रेस बीट करके आपको एटलीस्ट वो सक्सेसफुल नहीं, पासेस अब देंगे। ये वाले सिस्टम में अगर मेरे को जब आगे 3 बंदे हैं जो कि आपस में मिला के 50 गोल मार सकते हैं, हम्म, आई डोंट वांट एनी मिडफील्डर जहां पे आपको जो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप किसी को भी उठा के ले आओ। नहीं नहीं, फेयर इनफ, सो और एक अगर अपॉर्चुनिटी, ब्रूनो हाँ, हाँ, ब्रूनो उस रोल में कंफर्टेबल नहीं होता है या फिर मैनेजर से बात नहीं किया होता, तो अभी तक हम 100 मिलियन लेके उसको जाने दे चुके होते, राइट, ठीक है। राइट, बिकॉज ब्रूनो नोज अगर एम्बुएमो आ रहा है, कुनिया आ रहा है, और अगर हम स्ट्राइकर ला रहे हैं, नहीं भी ला रहे हैं, तब भी ब्रूनो इज नॉट गोइंग टू प्ले दैट नंबर 10 वाला रोल। ही विल बी प्लेइंग आइदर अलोंग साइड उगाटे और आइदर अलोंग साइड कैसेमिरो, सो तो उसको अपना रोल पता है, अब बट उसको समझ में आ चुका है कि उसको ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करने का है। उस पे मेरा पॉइंट ये कहना है कि एट दिस पॉइंट सिंस हम लोग वी ऑलवेज लुक शॉर्ट ऑन मिडफील्ड, राइट, एक अभी अपने पास मिडफील्ड ऑप्शंस क्या है, लाइक मेनू है आपके पास, कैसेमिरो है, अब मेनू कैन आर यू सीइंग मेनू फिटिंग इन दैट पिवट रोल कंप्लीटली, 100%, राइट, 100%। वो बिल्ड अभी अपना वो फिजिकल बिल्ड बना रहा है, राइट, सो अगर फुल प्री सीजन बनाएगा तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू बी ग्रूम, ठीक है। आपके पास कॉलियर, अब टोबी कॉलियर हो गया, टोबी कॉलियर हैड अ डिसेंट स्टार्ट टू इस सीजन इंजरी होने के पहले, राइट,
सो हाँ उसमें पोटेंशियल है। आपके पास सेको कौन है, लेकिन आई थिंक ही इज गोना गो टू अ बेल्जियन लीग फॉर अ लोन स्पेल, वही मेरे को ठीक है, न्यूज आ रहा चलेगा मेरे को। है, राइट। माउंट राइट, है आपके पास। बट माउंट माउंट अब ये कंफ्यूजन है, राइट, विथ माउंट। ना माउंट, वेयर डज ही फिट बेटर? आपके पिवट पे फिट, डज ही नहीं, फिट बेटर? फिट तो वो आगे ही बैठता है, बट देन वही वाली बात है कि अगर उसको आप पिवट में खिला दोगे तो माउंट का जो वर्क रेट है हम्म, और माउंट का जो प्रेस है और राइट, माउंट जिस तरीके से बॉल कैरी कर सकता है, राइट, ठीक है, तो ही इज अ टोटली डिफरेंट ऑप्शन। राइट। मैं वही बोल रहा हूँ, नाउ यू हैव प्लेयर्स हु आर वर्सेटाइल। हम्म, आप अगर आप कुनिया को अगर कुछ मैच में लग रहा है यार कुनिया आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप माउंट को वहां खिला सकते हो। ठीक राइट। है, ऐसा लग रहा है कि यार एम्बुएमो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है तो इसको थोड़ा पीछे कर दो, अमाद को थोड़ा आगे कर दो। ठीक है, बट अगर वो दोनों भी नहीं हो रहा तो ब्रूनो को आगे कर दो, हाँ, लेकिन मैनू खिला लो। राइट, बट उसमें मोस्ट गेम्स में क्या हो रहा है कि अगर ये तो कुछ ऑपोजिशंस के साथ आपका चल जाएगा, राइट, अगर कुछ ऑपोजिशंस के साथ नहीं चला, विच हैज बीन द केस दिस सीजन। अब मैं अब ट्राइंग टू शिफ्ट दिस कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स कैसेमीरो, पता है, अब वन ऑफ द मिडफील्डर्स वी हैव, कैसेमीरो, लेजेंड्स, वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, ठीक है, बट अभी 350K पर वीक पे है इस टाइम पे। उसकी कॉन्ट्रैक्ट अब 1 साल की बाकी है, 2026 पे आई थिंक द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग। हाँ। आप बाकी मिडफील्डर्स जो करंट लॉट अपने पास है, बट आई थिंक वी नीड टू रियली फोकस ऑन कैसेमिरो सिचुएशन नाउ। मेरे को मुझे ये फीलिंग आ रही है इस टाइम पे कि विद दिस फॉर्मेशन अगर हम उगाते और ब्रूनो पिवट पे जाते हैं, वी नीड ऑब्वियसली बैकअप्स, क्योंकि एक इंजरी हुई, वी हैव सीन मल्टीपल इंजरीज, और सीजन गोज डाउन डाउन द ड्रेन, राइट। तो वुड वी नॉट माइंड अ मिडफील्ड ऑप्शन राइट नाउ, कंसिडरिंग कैसेमिरो 1 साल का है? आर यू पोटेंशियली सीइंग कि कैसेमिरो के लिए पोटेंशियल बाहर आ सकता है, या एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा नहीं एंड नहीं, देन ही विल कैरी आउट हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड लीव ऑन अ फ्री एजेंट। राइट, राइट, वही होने वाला है, राइट। ठीक है, प्रॉब्लम इज आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इट्स नॉट लाइक यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल और आप लेने नहीं जा रहे। ठीक है, अनलेस और अनटिल यू एंड अप पेइंग 60 मिलियन फॉर एडरसन, राइट, उसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि फिजिबल है। और राइट। एडरसन भी इसीलिए फिजिबल है बिकॉज एडरसन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज प्लेइंग फॉर अटलांटा। ठीक राइट। है, तो ही विल लाइक न्यू चैलेंज, और उसको पता है अटलांटा से यूनाइटेड आएगा तो उसको थोड़ा सा पैसा मिलेगा ही। नहीं, फेयर एनफ, फेयर एनफ। ठीक है, लेट्स से सिचुएशन की डेफिनेट, आई एम प्रीटी श्योर, अमी अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर वी नीड अ सेंट्रल मिडफील्डर और नॉट। आप बोल रहे हैं कि आपको सेंटर बैक और लेफ्ट विंग बैक चाहिए, मेरे हिसाब से आई वुड नीड अ सेंटर मिडफील्डर, बिकॉज हम कंट्रोल लूज कर रहे गेम्स पे, एंड सेंटर बैक ऑप्शंस पे अपने पास ना लीचा लीचा तो बैक नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक हेवन इज बैक। आपके पास फ्रेडरिक्सन हैज हैड अ डिसेंट स्टार्ट टू द नहीं नहीं, सीजन। इन सब सॉरी भाई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इनके नाम कंसिडर भी नहीं करता। नहीं फेडरिक्सन नहीं, एंड ऑल दे आर नॉट रेडी। स्टार्ट, मैं स्टार्ट करने के लिए बात नहीं कर रहा हाँ, हूँ मैं, हाँ, तो नहीं स्टार्ट। बेंच पे भी नहीं। एट दिस नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, ओके, अगर हेवन को लग गई चोट, राइट। फेडरिक्सन के साथ हम टॉप फोर के लिए ट्राई करें। नहीं नहीं, टॉप फोर के विथ लिए ऑल तो ड्यू ट्राई कर ही नहीं रिस्पेक्ट, सकते। नहीं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो। हाँ, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे पास डिसेंट जो तीन सेंटर बैक है, सॉरी चार, चार दैट चार है अपने इज पास, मगवायर, यूरो, यूरो, डिलिट डिलिक, और और मार्टिनेज। क्या बोलते हैं आपका मार्टिनेज भी अभी काउंट नहीं करा, तीन ही है फिर। ठीक है, एक्चुअली में तीन है। हमारे को छह प्रॉपर सेंटर बैक चाहिए ये सिस्टम खेलने के लिए। लोग हमारे को फिर बात करते हैं भाई इंटर में, अरे इंटर में वर्सेटाइल प्लेयर्स थे, और इंटर की लीग इतनी फास्ट नहीं है भाई। देख लो उनका क्या हाल कर दिया उठा के पीएसजी ने फाइनल में। पीएसजी ने, फेयर एनफ, फेयर एनफ, फेयर एनफ, फेयर एनफ। ठीक है, तो वो एक लेवल तक चलता है, उसके बाद द लेग्स गिव अप। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। राइट। तो लीचा कब आएगा? आई एब्सोल्युटली लव लीचा, इसमें कोई प्रॉपर है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट लीचा कब आएगा वी डोंट नो। बट इस, लीचा लीचा आपका प्री सीजन में भी आ जाए और लीचा आपका जनवरी में भी नहीं है। राइट, एंड दैट्स व्हाई आई वांट कि भाई एक सेंटर बैक उधर चाहिए ही चाहिए। सेंट्रल सेंटर बैक यू आर फाइन। सेंट्रल सेंट्रल सेंटर बैक सेंटर तो बैक डिलीट और मैगवायर आपके पास हैं, वो डिलीटर खेलेंगे वहीं मगवायर पे। है ना, हाँ वो खेलेंगे। ठीक है, ल्यूक शॉ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे बिना जाएगा नहीं, तो ल्यूक शॉ आपका एक लेफ्ट का ऑप्शन है। राइट। फॉर मी इज अ डिसेंट इनफ ऑप्शन। ठीक अच्छा, है, अगर फॉर मी इफ इज इफ फिट इफ फिट इफ हाँ, फिट if it इज अ is डिसेंट he's a ऑप्शन। decent हाँ, option। ठीक है, हाँ, राइट। हेवन को आई डोंट वांना से कि अरे भाई ये तो अगला बस्टोनी बन गया जस्ट बिकॉज ही हैज 5-6 गुड गेम्स। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आई हेवन। रेट आई रेट हाँ, हेवन हाँ, वेरी हाईली। हाँ, फ्रेडरिक्सन वगैरह को मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा बिकॉज हेवन हैज ऑलरेडी शोड दैट। राइट, ठीक, राइट, राइट। राइट हैंड साइड पे भी आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं मजराई को सेंटर बैक नहीं देखता भाई, जिसको देखना है देखे, अच्छी बात है, उसको मौका मिला, ही प्लेड वेल, बट दैट सही है। डजंट मीन ही इज अ सेंटर बैक।
ऐसे तो डालो भी लेफ्ट और राइट पे खेल जाता है। तो हम इस पे मेरा क्वेश्चन है अंशुमन भाई फिर कि अगर अगर इफ यू सी Mazraoui does not fit at the right center back role, does he absolutely give the outputs you need for this system जो राइट विंग बैक पे आप Mazraoui को खिला सकते हो? बिकॉज राइट विंग बैक इस टाइम पे मुझे लग देखो, रहा है वो Mbuemo वैसे हमारा भी पास खेल बैकअप रहा है, है। हाँ, ठीक है, वो वैसे भी बैकअप है। और राइट विंग बैक पे मेरे हिसाब से अमाद विल प्ले, हाँ, एम्बुएमो आगे रहेगा। डेफिनेटली ये ठीक तो है, सील कर एम्बुएमो दिया उन्होंने। हाँ, हाँ, और ये थोड़ा सा स्विच भी करेंगे। मुझे लगता है हम मजराई को एज अ लेफ्ट विंग बैक का बैकअप देख रहे हैं। Mazraoui के एज अ व्हाट लेफ्ट आई विंग सी, बैक पे। ओके, ओके, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। ठीक है, नाउ दैट वी आर नॉट टेकिंग एनीबॉडी, राइट का हम सोच के बैठे हैं डालो, लेफ्ट का हम सोच के बैठे हैं, एंड नाउ दैट मजराई कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट हैंड साइड का सेंटर बैक, तो उसको राइट। राइट हैंड साइड के सेंटर बैक में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन कि यूरो वहां पे खेलता है, यूरो लेफ्ट भी खेल सकता है इफ नीडेड। राइट। ठीक है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इन सर्टेन गेम्स वी माइट इवन सी लेनी यूरो ऑन द लेफ्ट, डिलीट ऑन द राइट, एंड आपका मगवायर सेंटर में, हाँ, तो क्योंकि बट देन यू नीड बैकअप्स। राइट, क्योंकि लेनी ओरो ने खेला हुआ है लेफ्ट सेंटर बैक रोल एंड उसने परफॉर्म भी किया हुआ उस रोल पे, क्योंकि ही हैज दैट वो बॉल आगे लेके गया है। आई थिंक एवरीवन हाँ, रिमेंबर्स द माउंट गोल, राइट? कैसे वो प्रेस को बीट करके एग्जैक्टली। आगे। आई थिंक वो प्रोफाइल अभी चाहिए इन द सेंटर बैक्स। आई थिंक आई एग्री विद वन ऑफ योर पॉइंट्स। आई थिंक मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटर मिडफील्ड यहाँ की। दिस इज द प्लेयर आई वांटेड टू टॉक अबाउट एज वेल, हेडन हैकनी, राइट? आई मीन अगर अपने पास पैसा नहीं, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्ट्राइकर्स, या फिर लेट्स से वी गेट अ सेंटर बैक राइट नाउ एट दिस पॉइंट, राइट? आर वी लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी की वी पिक अप प्लेयर्स फ्रॉम द चैंपियनशिप जो धीरे धीरे ग्रो कर सके अपने पास? लाइक राइट नाउ ये प्लेयर की चर्चा काफी हुई, राइट? एंड there's a lot of suitors for this player right now. Hayden Hackney, right? 12 million की मार्केट वैल्यू है, चैंपियनशिप का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है, पास क्रिएशन और चांस क्रिएशन में मतलब मुकाबला ही नहीं है, राइट? इन चैंपियनशिप ऑन दिस प्लेयर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। आई मीन ऑब्वियसली वी डोंट सी हिम लाइव, बट कॉम्स काफी अच्छे हैं। Dispossessed, I mean this is one of the problems that United had last season, right? We used to get dispossessed in the midfield, and उसपे आएंगे different what is your opinion on this signing? कि अगर हम if we are not going for an expensive central midfield signing, are we looking at this opportunity? Should we look at this opportunity कि Hayden Hackney from Middlesbrough underrated signing grow कर सकता है, young है? मैं फिर फ्लेचर ब्रदर्स का क्या करेंगे हम? अगर हम सारे बाहर से उठा के ग्रो कराते रह जाएंगे, राइट, तो अकेडमी बंद करना पड़ेगा ना फिर भाई। फिर अकेडमी में इतने टैलेंटेड प्लेयर्स का क्या करें हम? राइट, इफ देन यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट सेकू कोनो 1 साल का लोन कमिंग बैक, ठीक है, देन यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट मूड हाउस, यू आर टॉकिंग अबाउट थ्वाइस, यू आर टॉकिंग अबाउट डैन गॉड इज स्टिल ऑन आवर पेरोल। हाँ। ठीक है, तो इन बंदों का हम क्या करेंगे? बट दिस द क्वेश्चन वही आ जाता है ना कि ऑब्वियसली दे हैवंट बीन प्लेड ऑन द बिग स्टेज, राइट? आर हाँ, तो फिर वही वाली बात है ना कि अगर आप उसको मौका नहीं दोगे तो वो बड़े स्टेज पे खेलेगा कैसे? एग्जैक्टली या तो सिचुएशन ये आइदर हाँ, आइदर आइदर टेक देम आउट ऑन अ लोन, कि आप 3-4 बंदों को लोन करो, वी एंड हैव उसके टू। बाद अगर आप उसके बाद एडन हैकनी पे 10 मिलियन डालना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एटलीस्ट आपके जो यंगस्टर्स है वो बाहर जाके वो बाहर खेलेंगे तो खेलना सही। पड़ेगा उनको, उनको आपको जरूरी आपको है। आइडिया मिल जाएगा वेदर दे आर गोइंग टू वर्क और नॉट। अगर वैल्यूएशन भी इफ तो दे आर बढ़ेगी हाँ, प्लेयर्स की। हाँ। इफ अरे वैल्यूएशन को अगर नहीं भी बढ़ी आश भाई, वैल्यूएशन नहीं भी बढ़ी, आपको एक राइट, औकात पता लग जाएगी ना वेदर दे कैन प्ले और नॉट। डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। हैकनी अगर आप 10-12 मिलियन में लेके आते हो, ठीक है, एंड दे गो आउट, एंड उसके बाद अगर वो वहां जाके हैकनी से भी अच्छा खेल जाते हैं, ठीक है, तो राइट, हैकनी आप 10 मिलियन का लेके आए हो यार, 10-12 मिलियन में किसी और को बेच देना, क्या राइट, दिक्कत आ रही है? बट अगर आप सिर्फ हैकनी लेके आ जाओ और उसके बाद उनको लोन आउट भी मत करो, तो फिर तो वो तो बोलेंगे यार कि हम तो फिर क्या करें, हम यहाँ राइट। पे क्लब में करते रहे। बट बट यू नो बट सिचुएशन ये है ना कि अब इस टाइम पे जैसे डिमांड्स ऑफ द प्रीमियर लीग का रिजल्ट्स की जैसे डिमांड है ना, इज 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 द इज द क्लब रेडी राइट नाउ टू कंप्लीटली की चांस दे दो एकेडमी को? इस टाइम पे वो सारे अपॉर्चुनिटी अरे नहीं है। एक दो पोजीशन में मैं बैकअप की बात कर रहा हूँ, हैकनी कौन सा स्टार्टर बनने जा रहा है? नहीं, 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 स्टार्टर तो नहीं बनेगा फॉर श्योर। हाँ, तो बस देन अगर आपको बैकअप के हिसाब से खिलाना है, तो आप थॉइट्स और ये तो आपके साथ खेल भी रहे हैं, राइट, राइट, राइट। ये तो आपके साथ इतने टाइम से खेल भी रहे हैं। ठीक है, हम्म। दे नो द सिस्टम इन एंड आउट इन टर्म्स ऑफ कि भाई उनको क्या करना है, वो मैनेजर के साथ ट्रेन भी कर रहे हैं, वो अभी टूर पे भी गए हैं। फेयर, फेयर, ठीक है, फेयर। तो मैनेजर नीड्स टू टेल देम कि भाई तुम हो इस पार्ट का, इस प्रोजेक्ट का पार्ट। राइट, ठीक है, अदरवाइज फिर क्या फायदा? फिर दे विल बी लाइक कि अगर हमें प्रोजेक्ट का पार्ट बोल के आप उसी रोल में 4 बंदे और यंगस्टर्स बाहर से उठा लेते हो हम्म, 10-10 मिलियन में, तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? राइट।
बट यू नो। एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, मैं ऑलवेज ट्राई टू प्ले डेविल्स एडवोकेट लाइक एनी आर्गुमेंट पे, राइट? सो दूसरी बात ये है कि अगर हर एकेडमी का प्लेयर तो आगे जाके दे माइट नॉट परफॉर्म। आई नो कि जब तो तक ऐसे आप तो बोल देंगे भाई हैकनी भी कैनॉट परफॉर्म। वही चांस की बात तो रहती है, बट भाई फिर वही वाली बात है, ये तो हर प्लेयर के लिए बोला जा सकता है कि ये बंदा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। राइट, बट लेट्स, अगर शिफ्ट करते हैं हम हैकनी से राइट नाउ, राइट, कि अगर हम इस प्लेयर की बात करते हैं, राइट, मॉर्टन होलमैन, राइट, अगर भाई इफ 50 मिलियन नहीं है मार्केट वैल्यू, हिज रिलीज क्लॉज इज 70 मिलियन। उसका रिलीज क्लॉज 70 मिलियन है इस टाइम पे। हाँ, हम्म। ही साइंड अ न्यू डील जिसके बाद उसको कैप्टन बनाया था, एंड स्पोर्टिंग इंसर्टेड अ 70 मिलियन का क्लॉज। तो ये प्लेयर तो कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन इस टाइम पे। थोड़ा सा कमेंट्स ले हाँ लेते हैं। प्रियांश बोल रहे हैं एवरी प्लेयर ट्रांसफर इज अ गैम्बल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रूवन हो, जरूरी नहीं गैम्बल है वो तो है, आपके पास। गैम्बल है, द गैम्बल एंटायर तो है। ट्रांसफर मार्केट इज अ गैम्बल। हाँ, अरे ये मैं आज आज भाई ओनाना को देख लो, बेस्ट गोलकीपर था 2 साल में, अभी उससे फटे हुए कच्चे उठाने की उसकी औकात नहीं है अभी। राइट बॉल तो बाकी बाद में उठाएगा वो। तो राइट वही राइट वाली राइट बात है, एनीबडी कैन फेल एंड एनीबडी कैन सक्सीड। राइट राइट राइट। एंड मैक्सी ओइडेले, आई थिंक उसके मैक्सी ओइडेले का न्यूज आ रहा है कि आई थिंक विल बी सोल्ड, राइट, और उसके उसकी सेलॉन क्लॉज अपने पास आएगी, उस वो पैसा पैसे अपने पास आएंगे, राइट। तो आई थिंक मैक्सी ओइडेले विल डेफिनेटली बी सोल्ड एट दिस पॉइंट। तो मॉर्टन Maxi Oyedele as a backup, I would have preferred more than anybody else. है ना, I really like मेरे को Oyedele, पसंद but था उतना। उसमें हमारा sell-on clause है, we don't have a buyback clause, हाँ, unfortunately. सैलॉन क्लॉज है, और सैलॉन क्लॉज अपने हाँ पास अल्वारो कैरेरास का भी तो है, इसका हाँ, द उसमें द बाईबैक लेफ्ट बैक। सेल ऑन दोनों है, उसमें बाईबैक और सेल ऑन दोनों है। ओएडेले में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ सेल ऑन है। राइट राइट राइट। सो आई थिंक कंसीडर कर सकते हैं कि होलमैन का ऑप्शन अब कंप्लीटली आउट हो चुका है इस तरफ से, बिकॉज वी कैन नॉट पे अफोर्ड इवन द रिलीज क्लॉज एट दिस पॉइंट। अगर रिलीज क्लॉज अटैच हो चुका है, वी कांट। वही बट है एच वाई, देखो रिलीज क्लॉज पे करना ना, रिलीज क्लॉज पे करना में फिर वही है, स्पोर्टिंग से हम जो भी बंदे उठाते हैं वो टचवुड अभी तक हमारे लिए 100% एक्यूरेसी रही है। एक्यूरेसी रही है, अच्छी हाँ रही ठीक है, जो भी जिसको भी लेके आते हैं वो भारी गिरते हैं, मतलब वो एवरेज वाला भी नहीं, वो नेक्स्ट लेवल फाड़ता है फिर। है। राइट तो राइट राइट। होमलैंड इज अ प्लेयर आई रियली लव। मैंने उसको हाँ, डेनमार्क के लिए भी खेलते देखा है, आई हैव सीन हिम प्ले आई हैव फॉर सीन एज स्पोर्टिंग एज वेल, वेल। एग्जैक्टली। ठीक है, बट देन अगेन आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होमलैंड की एज है आपकी 26 या 27। 25 है उसकी इस टाइम पे, 25 है, ये 25 है, हाँ। एक सेकंड में देख लेता एक हूँ। मिनट कंफर्म हाँ कर लीजिए, मैं वो 26 का, एक महीने में 26 का हो रहा है। ठीक यस है, यस। तो हम उस एज प्रोफाइल में अगर देख रहे हैं, तो अगर स्पोर्टिंग अगर 4 साल के हिसाब से पे स्ट्रक्चर करने को तैयार हो जाए, तो ही इज नॉट लाइक कि आउट ऑफ ऑप्शंस, हाँ कि मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ हमारे रेंज नहीं है। हाँ बट एग्जैक्टली, देन अगेन, स्पोर्टिंग के साथ डील करना पड़ेगा उस हिसाब से कि विल दे हाँ एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कंसीडरिंग दे आर अ सेलिंग क्लब, वो हमेशा सेलिंग। सेल करते हैं, बट देन अगेन क्या वो एक बारी में अपने इतने सारे प्लेयर लूज करेंगे? दे आर लूजिंग गेकोरेश, अगले साल वो कोंडा लूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। एंड एज नॉट मी सेड, एग्जैक्टली, गेकोरेश वो एक मतलब उनके पूरा का पूरा कोर ही खत्म हो जाएगा। यू नो फेयर 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 सो फेयर। आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू दैट। सो 70 मिलियन इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू आस्क। और भाई ये बंदे को तो पता नहीं लोगों ने भगवान क्यों बना रखा है। ओके, ठीक है, लाइक व्हाट्स योर लिटरली ओपिनियन ऑन एडम वाटन? वही इस पे, इसलिए मैंने सिर्फ 45 मिलियन इसकी एक्चुअली औकात है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने इसीलिए इंग्लिश 45 टैक्स मिलियन लगा डाला। के 60। भाई 100 मिलियन, 100 प्लस मांग रही है क्रिस्टल पैलेस। एब्सोल्यूट क्रिस्टल नट्स भाई, पैलेस, एब्सोल्यूट नट्स। मैं जब बात करता हाँ हूँ, एंड मैं ये स्टैट इसलिए लाना चाहता था, एडम वाटन मैंने इसलिए स्विच किया, आई नो योर ओपिनियंस है ना, मेरे भी ओपिनियन है कि आई लव द प्लेयर, मैंने जितना देखा है, बट 100 मिलियन, लाइक क्या बात भाई कर रहे मैं हो भाई? बोल रहा हूँ, इंग्लिश टैक्स लगा के भी ये मैक्स 60 मिलियन का प्लेयर है। वैसे अगर देखोगे तो 50 है, 45 to 50 आजकल के मार्केट में, तो अड़ा भी 40-50 है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ वाटन बीइंग रेटेड एट 60-65। बट ये मुंह ऐसे खोलता है, वो भी 100 मिलियन यूरोस की बात नहीं कर रहे, वो 100 मिलियन पाउंड्स की बात कर रहे हैं। पाउंड्स की बात कर रहे हैं। एंड तो एक स्टैट या नीचे देखनी बहुत जरूरी है, राइट? 18 गेम्स मिस किया इसने पैलेस के लिए, इंजरी प्रोन है मैं आपने। जब ये बोल रहा था, मैं ये जब बोल रहा था अपने स्ट्रीम पे, तो लोग बोल रहे थे भाई तुम्हें वॉटन से नफरत है। मैंने बोला अरे कौन सा, मेरे वो साला पड़ोसी का लड़का लग रहा है कि मेरे को नफरत है? कौन सा वो साला मेरे को अपने वेजेस में से पैसे निकाल के नहीं दे रहा, तो उसके बाद मेरे को उससे नफरत हो गई? एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली प्लेयर अच्छा है, कोई मना नहीं कर रहा, बट देन अगर आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखोगे जो सामने वाला मांग रहा है, राइट। सेम सेम थिंग आई यूज्ड टू से फॉर ओलिसे। हाँ वो बंदा 1/3 ऑफ द सीजन तो मिस करता था बिकॉज ऑफ राइट इंजरीज प्रीमियर लीग में।
भले ही बुंडेसलीगा में जाके वो कितना भी फाड़ दे भाई, द थिंग इज हर किसी के लिए प्रीमियर लीग नहीं बना फिजिकलिटी के हिसाब से। एंड दैट इज फाइन, एंड दैट इज फाइन, पता है, एंड सबकी प्लेयर की ट्रेजेक्टरी अलग रहती है, राइट? डूसान टैडिच को यहाँ पे बॉल उसको क्रॉस तक करने को ढंग से नहीं मिलता था। एंड देन आयाक्स में जाके ही एक्चुअली फाड़ दिया उसने जब आईपीएल जाके। हाँ, तो यही है सीन। एंड लोगों को ये समझना पड़ेगा कि समटाइम्स सम प्लेयर्स लाइक और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हमारे साथ लिंक्ड है, राइट? लाइक सिर्फ जॉन मटेटा हो गया, राइट? मुझे मेरा मेरा उसमें ओपिनियन है कि सम प्लेयर्स आर मेड फॉर क्लब्स जो उसी रेंज पे खेल रहे हैं। कभी कभी वो प्लेयर्स वो स्टेप अप नहीं ले पाते मेंटली, एंड दैट इज फाइन। एक प्लेयर की ट्रेजेक्टरी होती है एट दिस ऐसे पॉइंट। पता है क्या, 40 हाँ, मिलियन का आप साइनिंग करो ना, आप 45 हाँ, मिलियन का साइनिंग करो, वो अगर वो नेक्स्ट स्टेप नहीं भी ले पाता, हाँ, ठीक है, तो आप उसको 25 मिलियन में बेच दोगे बेच एक या साल बाद, डेढ़ साल बाद, लोन पे भेज जो भी दो, है, ठीक है। स्टॉक बेस कर दो। दैट्स अ लो रिस्क साइनिंग। आप ये बंदे को 100 मिलियन में लो, ठीक है, और ये बंदा पैलेस के लेवल पे ही खेलता रह जाए, ठीक बस है। ये तो एब्सोल्यूट लॉस हो गया, फिर कोई स्टेप अप हो ही नहीं, कोई पूरा क्वालिटी पूरा का अपग्रेड हुई पूरा नहीं। फैन पूरा का पूरा फैन बेस जो अभी वॉटन का, समझ जाओ कि मैं दीवाना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो फिर हाँ। वॉटन की पिछवाड़े में सरिया देने को रेडी हो जाएगा फिर। एब्सोल्युटली, आपके कॉम्प्स बन जाएंगे, आपकी हेट शुरू हो जाएगी, सब सब शुरू हो जाएगा, एजेंडा शुरू हो जाएगा ऑनलाइन, ट्विटर पे फैंस प्रेशर आएगा। एग्जैक्टली, अंकित भाई ने बोला ना 1500 मिनट के ऊपर नहीं खेला वो पिछले 3 साल में। वही ना, मैंने वही इसीलिए ये पॉइंट मैंने डाला हुआ है कि एज मच एज वी लाइक, आई थिंक वी बोथ एग्री ऑन दिस, एज मच एज वी लाइक दिस प्लेयर, भाई इंजरी प्रोन है, एंड हमारी सीजन्स डिरेल हुई है बिकॉज ऑफ इंजरीज। ईटीएच फिनिश हुआ था एट्स बिकॉज ऑफ इंजरीज। एक हमारे। सेकंड में एक कमेंट ले लूं आयुष भाई, लास्ट हाँ, लास्ट भाई लास्ट लास्ट सीजन मेन टीम में आया है, इसका मतलब ये थोड़ी था कि उसके पहले फुटबॉलर नहीं था वो, शिवम भाई, उसके पहले भी फुटबॉल खेल रहा था। और वेन किशानू भाई सेइंग कि पिछले 3 साल में 1500 मिनट के ऊपर नहीं खेला, तो भाई अंडर 21 के लिए खेल रहा होगा, अंडर 19 के लिए खेल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि ऐसे ही है ना, बिस्तर से उठा और आ गया फर्स्ट टीम में। तो वहां के भी मिनट काउंट होते हैं भाई, वहां पे फेयर भी फेयर, बहुत सारे गेम्स खेलने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसा एब्सोल्युटली। नहीं है कि 15 गेम का सीजन होता है लोअर लीग्स में, हाँ, मतलब PL2 में, उस तरीके से वहां पे भी बहुत सारे मैचेस खेलने मिलते हैं। सो हाँ, अकेडमीज के लिए भी ही वाज इंजर्ड, दैट्स राइट, व्हाट द पॉइंट इज। एग्जैक्टली। एंड कंसिडरिंग इस सीजन यूनाइटेड, एंड मेरा ये कहना है इस सीजन मैं पता है ये यूरोपा लीग फाइनल जो डिफीट था ना, एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अपनी स्क्वाड इस टाइम पे मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है कि हर 4 दिन खेले, राइट? राइट। बिल्कुल। और हर हफ्ते अगर इफ यू प्ले जस्ट वन गेम, एनफ टाइम मिलेगा एक स्क्वाड को ना फॉर्मेशन और वो टैक्टिक समझने के लिए, धीरे धीरे। हम्म, इस सीजन एटलीस्ट हर एक गेम पर वीक खेल के, एक तो प्लेयर्स की फिटनेस अच्छी रहेगी, आप रोटेट अच्छा कर पाओगे बेस्ड ऑन द कैराबो कप। इस साल मैं देखना चाहता हूँ कैराबो कप में ज्यादा रोटेशंस। आई डोंट वांट द लाइक्स ऑफ भाई ब्रूनो मैं एंड तो कह रहा हूँ अकेडमी वाले बंदे खिला दो यार, नॉट अ एग्जैक्टली। प्रॉब्लम एट ऑल। और ये हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था आपके आपके मैं सैफ के एरा में जाना चाहता हूँ, वो ये हुआ करता था, क्रिस ईगल्स वगैरह खेला करते थे आपके कैराबो कप के। लीग कप कोई ध्यान, एफए कप में यस वी नीड, एफए कप इज अ मैसिव कंपटीशन, वी नीड टू विन इट। बट एग्जैक्टली। कैराबो कप में तो वी कैन। एंड नाउ आई थिंक वी बोथ एग्री ऑन एडम वाटन, राइट? ग्रेट प्लेयर, इंजरी प्रोन, 100 मिलियन तो कभी नहीं, 30 40 40 मिलियन में अगर आता है इस प्लेयर, तो यस वी कैन डू। अच्छा प्रोफाइल प्लेयर है, लेफ्ट फुटेड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स काफी कम है इस टाइम पे मार्केट पे, राइट? एंड जिस तरह से उसने गेम खेली है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बिग टीम्स, राइट? फर्स्ट टाइम पे बॉल मतलब रिलीज करता है। प्लेयर में हाँ, क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल वांट हिम। क्वालिटी नहीं होता तो उसके बाद फिर कौन लेके आता उसको, सो दैट्स द थिंग। राइट। आई वुड रादर ग्रूम लेसी धीरे धीरे इन द स्क्वाड। लेसी भाई काफी बहुत मेरे को 2 साल के अंदर चाहिए टीम में, टू बी वेरी है ना, ऑनेस्ट, बट है ना। चलो। Whatever we saw, we absolutely liked it, right? You guys need Lamine Kamara. Okay, it's वो एस्टन विला का, right? So लमीन maybe not. कमारा, एडम वाटन इज एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली। Exactly. So Adam Watkins से switch करके we'll talk about this player now. Carlos Baliba. ठीक है, मार्केट वैल्यू जरूर 40 मिलियन है, बट ब्राइटन है, राइट? ब्राइटन सस्ते में कभी नहीं बेचेगी। लेकिन थोड़े भाई स्टैट्स देख लेते आई हैं। डोंट नो हु हैज टॉक्ड अबाउट हिज मार्केट वैल्यू एज 40। आई डोंट नो किसने बोला है इसकी मार्केट वैल्यू 40 है। इसको बलीबा को खरीद के लाए थे 20 मिलियन में, राइट। यू नो बलीबा। एंड हाँ, बलीबा का जिस तरीके से सीजन रहा है, बलीबा 60 इज 70 टाउटेड टू गो ओवर 80 मिलियन, आराम से, आराम से 80 यू नो मिलियन जाएगा, राइट? ठीक है। 27 मिलियन यूरोज में ये खरीद के लाया, मतलब 30 मिलियन का इनका पूरा पूरा पैकेज था।
ठीक है, और हम्म, इन्होंने 100 मिलियन का ऑलरेडी डाल रखा है प्राइस टैग इसके ऊपर, तो ही इज राइट नॉट गोइंग एनीवेयर। राइट राइट राइट, फेयर फेयर फेयर। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट कार्लोस बलिबा एज अ प्लेयर राइट नाउ। अब तो स्टैट्स की बात करें, 95% सक्सेसफुल ड्रिबल, जो प्रोफाइल हम एब्सोल्युटली मिस करते हैं कि मिडफील्ड में कोई ऐसे वी डोंट हैव अ गन मिडफील्डर की प्रेस को बीट करके आगे जाके फाइनल थर्ड में एटलीस्ट रिलीज द प्रेशर फ्रॉम द लेग्स ऑफ उगारते कि वो हमेशा स्पेस पे दौड़ते रहे। बॉल रिकवरीज देखिए 94% परसेंटाइल है उसकी बॉल रिकवरीज भाई, पर 90 स्टैट्स भी नहीं है, पूरे सीजन की स्टैट्स है। और बॉल डिस्पोसेस में 6.4%, मतलब इससे बॉल कोई आप छीन के ले नहीं सकता। आई मीन दैट वाज द बलेबा इज प्राइमरी रीजन। यार, हाँ हाँ, बलेबा इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर भाई। मॉन्स्टर मतलब है। जो भी ब्राइटन के लिए स्काउटिंग वगैरह करता है ना, भगवान जाने कहाँ से, मतलब उनका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी है, यू नो मतलब वॉट एवर दे साइन, एंड इस बार तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा था क्योंकि दे हैड द काइसेडो मनी। तो है ना। दिस टाइम वाज द फर्स्ट टाइम दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, ऑलमोस्ट 100 मिलियन खर्चा करा था इन्होंने मार्केट में। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस गाय इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, और अगर दिस आपको पर का जिसको भी, कमेंट। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जितनों के भी मतलब जो भी इसको लेना चाहता है भाई, दे विल हैव टू एंड अप पेइंग अराउंड द काइसेडो मनी, विथ हाँ ऑल हाँ, डू रिस्पेक्ट। फेयर ठीक है, फेयर। और ब्राइटन नहीं करेगी यार, ब्राइटन क्यों करेगी नेगोशिएट, अभी तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लाए हैं। ठीक है, ब्राइटन को कोई लोड है ही नहीं। राइट राइट ठीक है, सो राइट। एक और ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। आई थिंक आई नो आपको जल्दी निकलना है। आई थिंक आप कितने टाइम और, आप कितने टाइम और अभी अभी हूँ मैं 20 20 मिनट हो। 20 मिनट हो ना, तो जल्दी हाँ, जल्दी विल स्विच। ठीक है, जोआओ पालिनिया, अभी न्यूज आ गई कि बायर्न इज विलिंग टू सेल फॉर 35 मिलियन। क्या आप इस प्लेयर को 15 मिलियन में देंगे तो ले लूंगा। है ना, एक्सपीरियंस है राइट, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है एज भी तभी मैं सही बोल है। रहा हूँ, 30 साल का होने वाला है, पहली बात तो हम 30 साल के बंदों पे बिड करने नहीं जा रहे हैं। राइट ठीक है, राइट राइट और वो दिन हमारे चले गए जब हम 30 साल के बंदों पे 35 35 मिलियन 50 50 मिलियन देते थे। राइट राइट 15 मिलियन मैक्स। राइट राइट राइट। अभी नॉट मी बोल रहे लमिन कमार फ्रॉम मोनाको, अच्छा मोनाको का कमार, राइट राइट राइट, आई वाज थिंकिंग। मैंने देखा नहीं है ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने तभी मैंने इस भी पे नहीं कुछ देखा। बोला नहीं। मैंने भी नहीं देखा है, मैंने भी देखा नहीं है। चलो नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, अमादू ओनोना। ठीक है, क्विकली चलते हैं। एस्टन विला के पीएसआर इश्यूज हैं, लेट्स बी, वो तो क्लियर है एब्सोल्युटली। यूनाइटेड को जैसे ही नाम सुनेगी ना, वो सोचेगी अच्छा हमारा पीएसआर इशू है, एक काम करो यूनाइटेड से ही सारा पैसा पीएसआर का निकाल लो। ये ठीक है, ये ये प्लेयर एटलीस्ट अगर एस्टन विला बेचने की कोशिश करेगी 50-60 मिलियन के नीचे नहीं बेचेगी, राइट। 50 में तो लेके गई है भाई। और दे 70-80 हैव में। ब्रॉट हिम फॉर 50। 70 से नीचे वो आप जाओगे ना तो वो हंस देंगे आप पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नहीं नहीं, फेयर और एनफ। आई वो लास्ट ईयर लेके गए हैं, दे हैव राइट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, उनको पता है वो और बंदे बेच सकते हैं। अरे उनके पास ऑलरेडी 70 मिलियन डुरान का बचा है यार। एग्जैक्टली। वो बस उनके, उन्होंने बस लोन पे प्लेयर्स को लाए टू फिट इन अ सीजन, दे हाँ, ऑलरेडी हैव द मनी टू गो ओवर दैट पीएसआर का ये प्रॉब्लम सार का, इस सीजन आज के लिए। मैं एक लिस्ट उठा के देख रहा था, उसमें सिर्फ 2 टीमें हैं जो पीएसआर के चक्कर में है थोड़ा सा, वो भी हाँ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, तो इट्स नॉट गोना हैपन। गार्नाचो और ओनाना का स्वैप नहीं हो सकता भाई। Amado नहीं नहीं भाई। Amado Onana also is an injury prone player. Great यप। point Shivam. Absolutely bang on point. So इस प्लेयर पे हटके एंजेलो स्टिलर पे आते हैं, राइट। अब ये प्लेयर अवेलेबल है मार्केट पे। मैं आज देख रहा था कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड से बातें चल रही, बट रियल मैड्रिड इज नॉट विलिंग टू पे हायर फीस। इसकी रिलीज क्लॉज एक्टिवेट होगी 2026 पे, 36 मिलियन की। तो ये प्लेयर हैज दिस प्लेयर हैज बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक दिस सीजन, राइट। आप चांस क्रिएशन ले लो, आप बॉल डिस्पोजल, इतनी सारी स्टैट्स मैंने आपको अभी सामने रखी है, राइट। ये प्लेयर टेम्पो डिक्टेट कर सकता है। विल यू वांट, हैव यू सीन एनफ फ्रॉम एंजेलो स्टिलर टू सी कि ये यूनाइटेड पे फिट हो सकता है? आई हैव सीन एनफ कि डेफिनेटली ही फिट्स along with उगारते, बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। नहीं, मेरे लिए अभी फिट नहीं होता भाई। आई वॉन्ट टू सी अनदर सीजन ऑफ स्टीलर। है ना। ठीक है, अभी फिजिकली रेडी नहीं है बंदा फॉर प्रीमियर लीग। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यहाँ पे आप बॉल, जिस तरीके से टाइम आपको बुंडेस लीगा में मिलता है ना बॉल के साथ चीजें करने का, यहाँ में आपके धोती फाड़ के चले जाएंगे मिडफील्डर्स। राइट ठीक राइट है, राइट यहाँ पे स्टीलर पे बॉल जाएगी, दो बंदा कूद जाएगा। ठीक है, स्टीलर पापा मम्मी करने लग जाएगा। राइट क्वालिटी मैं डाउट नहीं कर रहा। ठीक है, रियल मैड्रिड हो या फिर कोई भी अगर टॉप की टीम आपके पीछे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्वालिटी है। आपके लिए राइट। कोई पैसे उतना देना चाहे नहीं देना चाहे, दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। बट अगर हम्म, आप किसी से लिंक्ड हो और जेन्युइनली लिंक्ड हो, दैट मीन्स यू आर अ गुड प्लेयर। ठीक है, फेयर मैं यहाँ फेयर। पे जब बैठ के बात करता हूँ ना कि भाई ये मेरे को नहीं चाहिए, मैं प्लेयर्स की क्वालिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ यार अंडरमाइन करने वाला? हम वो सिर्फ साले फुटबॉल फुटबॉल बच्चे खेल, लोग जानते हैं, हम क्या हाँ, जानते हैं। वो फुटबॉल खेल रहा है वहां पे, हम यहाँ पे राइट बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो ही हैज ऑलरेडी मेड इट। और हमने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में अपनी।
ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दोज प्लेयर्स, हम फैंस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, राइट ठीक है, और हमारे टीम को बेस्ट क्या होएगा उसके हिसाब से हम बात करते हैं. राइट एंड दैट्स व्हाई आई से वी आर नॉट पंडित्स हियर, वी आर जस्ट फैंस एक्सचेंजिंग आवर ओपिनियंस. राइट. ठीक है, अगर ऑल्दो वी आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द पंडित्स, बट स्टिल वो टैग हमें चाहिए नहीं. वो टैग नहीं चाहिए. एक वो टैग नहीं चाहिए. सो स्टीलर आई थिंक आई स्टिल वांट टू सी अनदर सीजन ऑफ हिम. फेयर एनफ, ठीक है, फेयर एनफ. एंड मार्केट वैल्यू 50 मिलियन फॉर अ प्लेयर लाइक स्टीलर इज टोटली फाइन. ठीक है, बट अगले साल 36 में मिल रहा है तो और भी ज्यादा अच्छा है. ठीक है, अभिषेक का कमेंट साल चलो. एक साल थोड़ा और. हाँ, हाँ. 135 मिलियन बिड रिजेक्टेड बाय लेवरकुसेन फॉर विट्स, वो हो चुका है 2 दिन पहले. नई बिड गई है 115 की. आई थिंक अगर वो रिजेक्ट होती है तो नहीं नहीं भाई, ये पॉल जो इसने अभी कुछ टाइम पहले डाला है, 135 मिलियन का पैकेज भेजा था, दैट हैज बीन रिजेक्टेड. राइट राइट. थॉट्स ऑन एंटोन स्टैश. नो एंटोन थॉट्स स्टैश. भाई. नो थॉट्स, मतलब मैं आई हैवंट सीन मच, तो मैंने इज इट द नहीं डॉटमंड नहीं मैंने. सेंटर बैक? हाँ हाँ. हाँ हाँ, ये डॉटमंड सेंटर बैक है, राइट. नहीं मैं नहीं, एंटोन स्टैच जर्मन फुटबॉलर वो है आपका, हॉफनहाइम वाला. स्टैच हॉफनहाइम इज का, राइट 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 एंटोन राइट वाला राइट सिर्फ राइट राइट. एंटोन है. एंटोन है, वो सिर्फ एंटोन एंटोन है, वाला राइट. सिर्फ हाँ एंटोन है. हाँ हाँ हाँ. नहीं, आई हैवंट सीन मच मैन, लाइक ऑनेस्टली दिस सीजन थोड़ा नहीं, आई हैव बुंदेस. सीन, बट हम 28 साल के बंदों के, हम 27-28 साल के बंदों के पीछे जा ही नहीं रहे यार. वी आर नहीं. नॉट इवन लिंक्ड. हम जा ही नहीं रहे. वो हमने पूरा का पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दिया अपना. वी आर नॉट गोइंग. इट्स नॉट अबाउट वांटिंग और नॉट वांटिंग और वो आएगा नहीं आएगा, हम जा ही नहीं रहे. यू नो, राइट 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 हम लिंक्ड ही नहीं है. राइट. फेयर एनफ, फेयर एनफ. सो अब ऑब्वियसली वी वेंट थ्रू द मिडफील्डर्स, राइट. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, लाइक एक क्वेश्चन. अब वी नो दैट ब्रूनो इज नॉट लीविंग, राइट. वी नो ब्रूनो इज नॉट लीविंग, बट मेरा सवाल यहाँ पे ये है, राइट, कि हैव वी, एंड इस पे बहुत डिस्कोर्स है, राइट. इस पे बहुत डिस्कोर्स है, ऑनलाइन से लेके सब कुछ. इसका आंसर मैं ऑलरेडी स्ट्रीम पे दे चुका हूँ ऐश भाई, बट आई विल हाँ गिव इट द आंसर अगेन. हाँ. क्वेश्चन तो मैंने देख ही लिया है नीचे. राइट. द प्रॉब्लम विथ अस इज कि गारंटी नहीं है कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो हम क्लब में डाल देंगे. फेयर. एग्जैक्टली. ठीक है, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना. ठीक. और मुझे अगर ये हाँ गारंटीड होता ना कि ब्रूनो से 115 मिलियन आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, डजंट मैटर. मैं एक एग्जांपल दे रहा हाँ. हूँ. वो गारंटी के साथ पूरा का पूरा पैसा क्लब में लगता, आई राइट. वुड हैव बीन लाइक ठीक है जाने दो ब्रूनो को. ठीक है. फेयर फेयर. मुझे पता है हमारे ओनर्स ऐसे हैं, वो सारा का सारा पैसा. भाई मैं तो कह रहा था ये जो ब्रूनो ने जो अपना डिसीजन दे दिया ना, वो एक हफ्ते और रुक जाना था. हाँ, मैं उस पे आने वाला था कि रोक हाँ, लेता डिसीजन तो अब पता चलता कि हाउ द रीबिल्ड इज एब्सोल्युटली गोना हैपन. एम्बुएमो, कूनिया एंड ब्रूनो का एक, लाइक एम्बुएमो भी अनाउंस हो जाता और ब्रूनो भी रहता कि मैं नहीं जा बोल रहा रहा हूं, हूँ तीनों का गेकोरेस खुदवा. तक अनाउंस हो जाता. मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, अभी तक हम 30 में गेकोरेस अनाउंस कर दिया होता फेयर हमने. एनफ, फेयर एनफ, फेयर एनफ. ठीक है, बट दैट्स व्हाट आई सेड कि मेरा एक ही पॉइंट है कि हमारे को एक रत्ती भर का भी, राइट. जिसको ग्लेजर्स में भरोसा है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज, मेरे को नहीं है. किसी को नहीं है, ठीक है. एंड मुझे तो है ही नहीं. एंड द लास्ट एंड इवन सम ऑफ द इनियोस ट्रांसफर्स हाँ. अभी जो होने वाले हैं, राइट, नॉट एवरी ट्रांसफर इज वर्कड ऑफ एज वेल, राइट. धीरे धीरे दे विल स्टार्ट कमिंग ऑफ. एंड मेरा पॉइंट अराउंड ब्रूनो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल भी कर लेते ना, इज द स्क्वाड राइट नाउ मेंटली रेडी टू डू सम काइंड ऑफ रीबिल्ड विदाउट देयर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लान, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर? नो, एब्सोल्युटली नॉट भाई. अगर ब्रूनो सेल करेंगे, राइट, स्पाइन हिल जाएगी टीम की. एब्सोल्युटली. एक मैं ही मुश्किल से आपके पास 2-3 लीडर्स हैं, उसमें से अगर आप ब्रूनो अगले साल कैसेमिरो, तो भाई आप लीडर बनाओगे किसको? वो यू तो नो. जाएगा नेक्स्ट ईयर. वो तो हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट वो तो खत्म जा ही ही है, रहा है. राइट. और लीडर्स के नाम पे आपके पास सिर्फ मैगवायर और डिलीट रह गए, जो आई डोंट थिंक सो वुड बी द फ्यूचर कैप्टन्स ऑफ मैन यूनाइटेड. लेट्स बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट हियर. तो ये होने वाला है आई थिंक. अंशुमन भाई, डू यू सी नेक्स्ट ईयर, दो नेक्स्ट ईयर ब्रूनो का आप सेल देख रहे हो क्या? इन माय ओपिनियन नो. ब्रूनो कभी नहीं मुझे जाना लगता चाहिए है, मेरे हिसाब से. मुझे ऐसा लगता है यू नीड प्लेयर्स लाइक देम. ठीक है, अनलेस और अनटिल ऐसा हो जाए कि इंजरी विंजरी का कुछ हो जाए, टचवुड वैसा ना हो, या फिर ब्रूनो इज एब्सोल्युटली फेड अप विद द लाइफ. ठीक है, हम्म. फिर वो शायद हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता वो होगा. राइट 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 राइट. आई थिंक इस पे तो काफी क्लियर है एट दिस पॉइंट. आई थिंक इट इज हाँ फैंटास्टिक न्यूज फॉर यूनाइटेड फैंस कि ब्रूनो नहीं जा रहा है, राइट. सो हाँ.
फेयर एनफ, बट वही बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सेल हो जाता, बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मनी कहाँ जाता। वी वुड हैव ओवरस्पेंट ऑन सम प्लेयर्स एंड वो रीबिल्ड नहीं, एक और 2 साल आपको खींच लेता अंदर, राइट। सो एग्जैक्टली। उस पे है। और एक सवाल यहाँ पे है, राइट, कि अब हम लोगों ने गार्नाचो के बारे में बात करी, राइट। अब इस पे चांसेस ये है कि अब इस पे आ जाते हैं, सिंस यू डोंट हैव मच टाइम, राइट। रियलिस्टिकली रियलिस्टिकली हाउ मच टाइम डज एमरिम हैव एट यूनाइटेड? अब हम बात करते हैं 2 रीबिल्ड years, की, हम बात करते हैं कि वी शुड बी ट्रस्टिंग हिम, बट दो 2 years with proper transfer windows, 2 years. ये हमारा पर्सपेक्टिव एज अ फैन। मैं सोच रहा हूँ कि अब इनियोस का सोच रही होगी नेक्स्ट सीजन के लिए, 2 years, अगर इनियोस उससे कम सोच रही है तो इनियोस चूतिया है। राइट, एग्जैक्टली। टू आप इयर्स अगर अगर उन्होंने क्लॉप को ट्रस्ट नहीं किया होता, क्लॉप पहले सीजन आया था, राइट, ही फिनिश्ड 8 लिवरपूल के मामले पे एंड उसने भी तो टाइम लिया ना प्रूव करने को अपने आप को। भाई, एक प्रीमियर लीग है, लोगों को क्यों नहीं मजाक बात नहीं समझ है, में आती? इट्स ओवरनाइट नॉट, चेंज नहीं हो इट्स सकता। नॉट, हाँ। अब लोग बोलेंगे भाई आर्ने स्लॉट तो पहले, अरे आर्ने स्लॉट के पास क्लॉप की टीम थी भाई, आर्ने स्लॉट को अपनी टीम बनाने दो। एग्जैक्टली। एंड ठीक है, क्लॉप आई एम क्लॉप नॉट टेकिंग हाँ, क्रेडिट, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम स्लॉट। वो उसके साथ भी कॉन्टेक्स्ट जितना समझने की बड़ा जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट समझने की कॉन्टेक्स्ट है, जरूरत है। कि हाँ, उसका काम उस मामले में आसान था कि उसको स्क्वाड या स्ट्रक्चर या फिर उसका फॉर्मेशन ये सब चेंज नहीं करना था। राइट ठीक है, राइट राइट, 2 साल एग्जैक्टली। के पहले अगर एमरिम गया तो मैं तो कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो मैं बोलना नहीं चाहता। तो वो मेरा मैं, भी मेरा भी वही पॉइंट है एट दिस पॉइंट, हाँ। कि उस बंदे ने, एमोरिम हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ टर्निंग टर्निंग कंप्लीटली टर्निंग अप फॉर अ टीम, लाइक स्पोर्टिंग का हम्म टर्न अराउंड हो गया भाई जिंदगी में। लाइक अभी इवन आफ्टर एमोरिम हैज लेफ्ट, एंड दिस इज एग्जांपल व्हाई अगेन गाइस, आई एम नॉट कंपेयरिंग क्लॉप एमोरिम या कोई भी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की बात यह है कि एक मैनेजर कुछ साल जब रहता है, राइट, ही क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिकली टीम एक ऑटो पायलट मोड में खेलने लगती है। लिवरपूल को देखिए, स्लॉट हैड टू जस्ट ट्वीक फ्यू सिस्टम्स, वो हाँ उसने अग्रेसिवनेस को थोड़ी सी कम करी, थोड़ी कंट्रोल लाया गेम में, दैट्स व्हाट ही ऑल ही डिड। बाकी टीम जैसे अटैक कर रही थी, जैसे प्रेस कर रही थी, वैसे ही प्रेस कर रही है। स्पोर्टिंग लिस्बन एमरिम जाने के बाद भी लीग जीत के आई है, हम्म राइट। क्यों ऑटो पायलट मोड पे खेल रहे हैं? क्योंकि उनके सिस्टम दिमाग में घुस गया है, डीएनए में घुस चुका है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर वी वांट टू। अगर एमरिम नेक्स्ट 2-3 साल में, क्या 4-5 साल में रह के, ऑब्वियसली एंड दिस मॉडर्न एज कोई मैनेजर अब 20 साल नहीं रहने वाला क्लब में, लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं, एमरिम वो नहीं वो नहीं होने वाला, भाई, वो राइट। 20 आई साल में होप सात दो, बट सात टाइटल जिता दे वो अलग की चीज है, बट वो तो दैट इज फॉर ड्रीमिंग पर्पसेस। या एब्सोल्यूट ड्रीम पर, बट लेट्स वही मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, राइट। अभी अगर एमोरिम 4-5 साल एक अच्छा स्ट्रक्चर दे के चला जाए यूनाइटेड, राइट, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बट दिस इज वेयर वी हैव टू बी लिटिल पेशेंट एज अ फैन बेस, कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा कि इनियोस, एंड दिस इज वेयर आई एम गोना कम टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट। डिड डैनियल लेवी कल सैक एंड जो सैक हुआ है, राइट, did Daniel Levy avoided the mistake Ineos did with ETH and not dealing the sack of Ange? मेरे हिसाब से फैंटास्टिक डिसीजन। अगर बैक कर रहे हो बोर्ड कि नहीं तू मैनेजर, यू आर नॉट राइट फॉर द क्लब, सैक अभी, rather than investing 200 million again on a transfer window and then 3 महीने पे आप सैक कर दो। What do you think about this? नहीं नहीं, लेवी तो चूतिया है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आप यू नो और कुछ नहीं, पावर स्ट्रगल में उसने बिकॉज फिर ही वन यू द यूरोपा लीग। ठीक है, लीग में आप बहुत ही घटिया खेले बिकॉज दैट वाज आल्सो ऑन द इंजरीज। ठीक है, डिफेंस आधे टाइम आपके पास था नहीं, Right, मिडफील्ड में इतने सारे बंदे इंजर्ड, यू right, हैड अदर प्लेयर्स हु वर इंजर्ड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। right. ठीक है, रोमेरो एंड ही स्टिल, हाँ, मैं कल स्टैट एंड देख ही, रहा था, हाँ। हाँ रोमेरो और वैंडरवेन ने दोनों मिलकर करीब करीब 40 के ऊपर गेम्स दे मिस्ड, मतलब दिस होल एग्जैक्टली, सीजन। एंड दैट्स एंड स्टिल दे वेंट ऑन टू गेट इनटू द चैंपियंस लीग। हाँ। ठीक है, अब ना ये, अब पता है क्या होता? हम्म अब पोस्टेकोग्लू को अगर ये रोक लेता ना, हम्म पोस्टेकोग्लू वुड हैव डिमांडेड लॉट ऑफ थिंग्स और आपको उसको देना पड़ता। राइट क्यों? राइट क्योंकि वो अब जीत के आया है। हम्म ठीक है, हम्म तो दे आर लाइक कि भाई हम यहाँ पे ये सब करते नहीं, हम जीतते वीतते नहीं है, तूने ट्रॉफी जिता दी, चल निकल यहाँ से। ठीक है, हमें हम्म ऐसा बंदा चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए कि भाई हमारे को ट्रॉफी वगैरह ना जिताए, यूसीएल यूसीएल खिलाए। राइट ठीक है, पैसा वैसा हमारा बनता रहे। हम्म बट यूसीएल इसने खिला दिया, बट इसने यूरोपियन ट्रॉफी जिता दी। राइट
अब इनको क्या लग रहा है कि कोई और दूसरा मैनेजर आएगा, वो क्या इनको यूसीएल जिता देगा? चांस बट तो नहीं है। पोस्टेकोग्लू लेवी के लेवल से ऊपर चले गए। पोस्टेकोग्लू मांगता पैसा कि भाई डालो 150 मिलियन स्क्वाड के अंदर। राइट पोस्टेकोग्लू राइट। बोलता है हमारे पास जो टॉप के प्लेयर्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट दो। हम्म। बट देन इट्स नॉट इन द स्पोर्ट्स डीएनए टू विन अ ट्रॉफी। तो उनके हिसाब से दे हैव मेड द राइट डिसीजन। जो ट्रॉफी जीता है उसी को निकाल दो बेंच। न रहेगा जिताने वाला, न कोई बोलेगा जीतने को। बेस्ट ऑप्शन। नहीं नहीं, अभी अभी ये एक और हाइंड्स, अभी ऑब्वियसली थॉमस फ्रैंक इज हेवीली लिंक्ड राइट टू, आई थिंक आई थिंक मेरे हिसाब से थॉमस फ्रैंक वो स्टेप अप लेने वाला है एट दिस पॉइंट। डू यू सी थॉमस फ्रैंक स्टीलिंग द एम्बुएमो डील फ्रॉम अस? नो, नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, बट एमओएम बोलेगा साला मैं इससे बढ़िया ब्रेंटफोर्ड में ही खेल लेता हूँ। नहीं, और एक बट ऑन द हाइंडसाइड दो राइट, कि अभी मैं अगर आप दूसरे साइड पे कॉइन पे जाए राइट, यस स्पर्स जिंदगी में यूरोपियन ट्रॉफी नहीं देखती अगर एंज नहीं होता। व्हाट दे प्लेड, हम्म, व्हाट दे डिड, एब्सोल्युटली फेयर इनफ। हम्म, बट कमिंग फ्रॉम ड्रॉपिंग डाउन, एंड मैं कुछ कुछ स्टैट्स डालूंगा राइट, ऐसी नहीं है कि लास्ट ईयर रोमेरो ऑलमोस्ट प्लेड अ फुल सीजन राइट विद सम ऑफ द सेंटर बैक्स, उन्होंने 61 गोल्स कंसीड करे थे। इस सीजन भी 65 गोल्स कंसीड करे। एक क्रिटिसिज्म है अराउंड एंज राइट, व्हाई ही एंड स्पर्स इस सीजन राइट वी हैव सीन दैट एक या दो गोल लीड पे रहती थी, बट दे गिव द लीड ऑफ बिकॉज उनके हम्म, गेम मैनेज नहीं करती थी, एंड दैट्स वन ऑफ द हाँ। रीजंस दे स्लिप्ड आउट टू द 17th प्लेस एज वेल। डू यू सी दैट दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि 17th आया तभी सैक हुआ, या कंप्लीटली पावर स्ट्रगल था ये विद डैनियल लेवी? नहीं भाई देखो, बिना इंजरीज के प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स योर डिफेंस विल, ऑफ कोर्स एंज के पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड ऑप्शन जो सेकंड प्लान भी नहीं है डिफेंसिवली। राइट ठीक है, दैट इज ऑलवेज द क्रिटिसिज्म विद एंज पोस्टेकोग्लू कि वो एक ही तरीके से फुटबॉल खिलाना जानता है। राइट। उसने पूरा का पूरा अपना गेम प्लान चेंज कर दिया फाइनल में, एंड दैट्स व्हाई ही वन द फाइनल। उसने हाईलैंड वगैरह को बोला कि कचरे के डब्बे में डालो। उस दिन आई वाज सो सरप्राइज भाई जब मैं हाँ, देखा कि 1-0 पे स्पर्स प्रेस नहीं कर रही है, स्पर्स भाई डिफेंड हाँ, कर रही है, स्पर्स लो ब्लॉक खेल रही है। हाँ, देन उसी एग्जैक्टली वक्त पता चल गया था मुझे कि यूनाइटेड हारने वाली है राइट। हाँ, तो बट वही वही वाली चीज। ये क्रिटिसिज्म था ना कि व्हाई डिड नॉट ही अडैप्ट अकॉर्डिंगली इन द प्रीमियर लीग भाई द देखो सेम वही वे। वाली बात है ना, जब उसको दिख गया ना, एंड आप पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक। वो हाँ यूरोपा लीग में वो गलतियों से सीखा अपनी। एंड आई राइट थिंक वो एक भी एक फैक्टर था, कि वो देखा लेविन ने कि भाई अगर ये चीजें सीख रहा है और उसके बाद ये चीजें को बेटर करके और पैसे मांगेगा, तो राइट। फिर हमारे को दिक्कत हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। तो जो भी रीजन था, आई एम नॉट सेइंग कि थॉमस फ्रैंक इज अ बैड मैनेजर, एंड आई थिंक ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब विद ब्रेंटफोर्ड। सो अगर वो वहां पे जाते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। बट देन अगेन आई विल से कि ये जो जो डिसीजन था इसको निकालने का, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। फेयर 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 फेयर। एक एक यहाँ पे एक पॉइंट मेरा था अराउंड एमरिम। आई थिंक एमरिम के बारे में भी लेट्स आई वांट टू टॉक राइट नाउ राइट, कि मुझे क्या डर लग रहा है ना भाई, कि अगर आई एम मैं मुझे पूरा भरोसा है कि विल प्ले मच बेटर फुटबॉल देन वी डिड लास्ट सीजन। बट मुझे क्या लग रहा है ना कि हाउ इनियोस ऑपरेट्स, आई मीन एग्जांपल देता हूँ हाउ द डैन एशवर्थ एपिसोड वर्कड आउट राइट। हम वेट किए डैन एशवर्थ का 6 मंथ्स तक राइट, then we paid 6 million for him. सैक किया, then we had to pay that relieving fee, अब 10 million उस पे खर्चा किया। what I feel there's a thing that with Ineos कि अगर Amorim does not do well by December right, सैक होने के तो चांसेस। अपना ओनरशिप का स्टेक बेच के चले जाना, क्योंकि तुम ही पनौती हो बहन चो। ठीक है, एब्सोल्युटली, तब तो कतार आना ही चाहिए। शेख जसीम एब्सोल्युटली। फिर तो तुम ही पनौती हो, जाके चरणों वरनों में गिर जाओ शेख जासिम के कि भाई हमारा स्टेक ले ले और राइट ग्लेजर्स का भी ले ले। राइट ठीक राइट है, राइट बिकॉज अगर आप इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे फिर तो यार आप नल्ले हो यार। और मैं तो एशवर्थ के फेवर में कभी नहीं था, मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो। व्हेन ही केम आई वाज लाइक चलो ठीक है, बिकॉज ही वाज सो ऑब्सेस्ड विथ मीडियोकर। उसको वो न्यू कासल के ऊपर बरी नहीं पा रहा था भाई। उसको लग रहा था साउथगेट इज द ऑप्शन। उसको लग रहा था कि भाई ये फलाने ढिमकाने वाले ऑप्शन, मतलब ही वाज थिंकिंग। इसके पहले वो ब्राइटन में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट राइट। और वो तो न्यूकासल में भी कुछ टाइम था राइट। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, न्यू कासल में ही डिड वेल, बट देन अगेन न्यू कासल में भी उसका ऑब्सेशन था साउथगेट के साथ। राइट। अगर वो यहाँ पे सही बता रहा हूँ, अगर हम्म। ये डिसीजन को लेके उसको हटाया, आई एम वेरी हैप्पी। या गौरव यहाँ पे तो क्वेश्चन एक, हाँ आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी अभी टेक्निकल डायरेक्टर जेसन विलकॉक्स है
I think हाँ he has taken over अभी इस टाइम पे. So यहाँ पे एक 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 अच्छा सा सवाल यहाँ पे था, right? Before you like leave, at least आपके पास कितना मिनट है और? बस निकलने ही वाला हूँ भाई बस. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर डेफिनेटली आई विल आल्सो टेक, फिर मैं अपना स्ट्रीम कंटिन्यू करूंगा, हाँ बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल. थॉट्स ऑन अमाद एज द राइट विंग बैक इन द प्रीमियर लीग. भाई मैं इस पे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई एम नॉट कन्विंस्ड. मैं भी यू कन्विंस नो, नहीं हूँ यार. आई एम नॉट कन्विंस्ड. फिजिकली ही कैन गेट बुलीड. और उसके ठीक हीट है. मैप में भी मैंने एनालाइज कर रहा था कल ही बैठ के, लाइक वो है, लेकिन उस पे सारा आप पूरा बर्डन डाल दोगे कि वो ट्रैक बैक नहीं, करके मैं डिफेंड. उसी पे आ रहा हूँ कि नाउ दैट वी आर गोइंग टू गेट एम्बुएमो, तो अमाद के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि एम्बुएमो विल प्रोवाइड विथ हिम द क्या बोलते हैं, और अरे यार उसको, फिजिकलिटी, ब्रूट फोर्स. फिजिकलिटी और डिफेंसिव, हाँ डिफेंसिव कैपेबिलिटी, क्योंकि वो खेल चुका है उस रोल में. राइट. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आप मिड गेम में भी स्विच कर सकते हो, कि अमाद को आगे कर दिया, पीछे कर दिया एम्बुएमो को, तो राइट. बट ओवर अगर आप मेरे से बात करोगे यार, तो मेरे हिसाब से ही इज नॉट अ विंग बैक मटीरियल. है ना. ठीक है, जो आउट एंड आउट आपका विंग बैक होता है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली, और स्ट्रॉन्ग आपका विथ द रनिंग एंड ऑल. अमाद इज वेरी गुड इन क्लोज स्पेसेस. वो ट्रिकरी कर सकता है, वो थोड़ा ड्रिबल कर सकता है, ही कैन गिव यू दोस क्रॉसेस एंड ऑल, बट स्टिल आई हाँ, थिंक हाँ. he should not have been our first choice, but looks like he will be our first choice. है ना. नहीं, फेयर हाँ. इनफ. बट लाइक एग्जैक्टली, एंड ये मेरा भी यही पॉइंट है. आई थिंक एक स्टैट मैंने लास्ट सीजन देखा था अराउंड की, जब एमोरिम नैने आया था, एंटनी एंड अमाद का कॉम्बिनेशन एट द विंग बैक्स ऑन द राइट प्रोड्यूस्ड मोर गोल्स देन अस प्लेइंग डिफेंसिव विंग बैक्स. तो उस टैक्टिकल स्विच में आई थिंक एमोरिम वर्क्स. आई थिंक द वे वो इसका क्वेंडा क्वेंडा आल्सो वर्कड एट स्पोर्टिंग. आई थिंक वही फॉर्मेशन पे जाने वाली है. आई थिंक अमाद और Mbuemo will flip. एम्बुएमो के साथ. But I'm still Yeah. not convinced. We might need a new wing back. I think one of the points you had mentioned But previously. ये सीजन में तो नहीं आएगा, राइट विंग बैक तो डेफिनेटली नहीं आ रहा. इफ दिस एक्सपेरिमेंट फ्लॉप्स मेरे हिसाब से, हाँ, अगले साल हम मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे. fair, बट fair, fair. आई विल डेफिनेटली रिव्यू द चांस ऑफ नॉट एटलीस्ट ट्राइंग फॉर यू नो Hmm, फ्रिंगपोंग. हमने ट्राई तक नहीं किया, तो absolutely. वो मेरे को डेफिनेटली दैट विल हर्ट मी. Definitely, definitely. And yeah, I mean, these are the topics I wanted to discuss, Anshuman bhai. And आपको अगर आगे जाना है तो thank you so much, man. Thank चलो you. मैम, अरे Thank ऑलवेज you ऑलवेज ग्रेट so टू much. टॉक टू यू. Like, मेरा नया चैनल है, and thanks for supporting me on my new अरे channel. ऑलवेज भाई. मेरे And को भाई देखो, मैं सिंपल सी बात है, इफ यू आर यूनाइटेड फैन, मैं तो वैसे भी सपोर्ट करूंगा. ठीक है, आपके भले ही मेरे साथ व्यूज उस तरीके से अलाइन हो ना हो, ठीक है, मैं जितना कर पाऊंगा जिस तरीके से सपोर्ट, आई विल ऑलवेज डू दैट. मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई. नहीं, ठीक डेफिनेटली. आई है, मीन, तो हाँ, वही एंड हम लोग काफी हाँ, स्ट्रीम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड दिस सीजन. डेफिनेटली भाई डेफिनेटली. Thank you so much for joining. We will चलो still continue the stream, but thank you so much for मैं Anshuman bhai. निकलता हूँ भाई. चलो, गुड नाइट, टेक केयर गाइस. Absolutely, absolutely. चलो. Great. So मैं थोड़ा सा comments और ले लेता हूँ. Definitely. What a fantastic stream, guys. आज Anshuman, and yeah, I'm going to take a lot of comments. जो comments already miss हो चुके थे, and the people who are watching on Twitter, please join the YouTube channel. YouTube पे आइए. I'll be able to take your comments and I'll be able to give you more perspective on this. Fantastic discussion today with Anshuman bhai. We obviously discussed a lot of points. कुछ points पे मैं agree करता हूँ, disagree करता हूँ, कुछ points पे वो disagree कर रहे थे, agree, and that's how football discourse should be, right? आप हर बात पे, like, this is how it should be, right? And this is why I love what Anshuman does on a daily basis. And this is absolutely fair, man. What a and big up, man. Such a huge channel joining on my stream is as a massive thing. And I think we might have also uh, uh, jumped 200 subscribers. So absolutely big day for my channel today. It's been only 3 weeks. All the new members that have joined my channel today, right? मैंने 2 वीडियोस डाली हैं अराउंड मैथ्यूज कुनिया एंड आल्सो फ्लोरियन वर्ड्स, राइट? वो जाके देखिए. दिस द वीडियोस आर डूइंग रियली वेल. एडिटेड एंड कॉन्सेप्चुअलाइज सारे चीज. आई हैव डन इट. But I'll take a lot of comments. So do check it out. Do subscribe to the channel. Discord link भी chat पे है, right? Discord link chat पे है. Do join. It's a massive thriving community. Um,
तो कमेंट, Ashworth is director of football, not Ashworth, Wilcox, Jason Wilcox है अभी इस टाइम पे. योशिका, थैंक यू सो मच, कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच. 200 अभी शुरुआत है. There's gonna be lot more sessions going on. बहुत लंबा सीजन है. Will slowly grow with this channel. Thank you so much for the support. um, I think एक चीज पे बात कर लेते हैं. I think some of the transfers that are gonna happen, right, with Mbuemo, right? I don't think so Spurs will be hijacking this deal. I think Mbuemo ka transfer will be completed this season no matter what. And I think also let's take some comments around what do you guys chat pe aap bataiye mujhe, right? What do you guys think about Manchester City's total transfer season at this point? मैनचेस्टर सिटी के ट्रांसफर सीजन के यार बात बताइए. आई लाइक टू हियर ऑल द चैट्स फ्रॉम यू गाइस एंड whoever is watching on Twitter, right? आप प्लीज यूट्यूब पे आइए, कम टू यूट्यूब, ping your chats, and uh, that I'll be able to take your comments. Absolutely. You'll also join on someone channel with being more and more civilized and more thoughtful creator. Absolutely. Absolutely, Nikhil. Thank you so much. Thanks for this comment. That's what I want football discourse to be like. आराम से chill करके बातें कर सकते हैं. Points आप दे सकते हैं. We'll agree, we'll disagree. That's how football discourse should be, man. तभी आप दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ भी पाओगे. From where a fan is also coming from, right? कुछ भी कर लो, Pep is on a downfall. नहीं भाई, तुम पेप को डाउनफॉल नहीं कर सकते. लास्ट सीजन मिड में ही वाज ऑन अ डाउनफॉल, बट he definitely came back. He now Pep is absolutely thinking out of the box. Look at the signings with Reinders, Cherky, and आपके Ait Nouri. They know what they need to do right now. और already वो Vitor Reis भी आ रहा है. They're signing that they've done already. So they are in a great situation with Marmoush, Haaland, Foden. Be Do you think Foden will continue the same form like this season? No. Foden आएगा वापस. Downfall में exactly Cristiano. Downfall in his downfall era, he finished third. So you cannot discount City at any way. मेरे हिसाब से City will absolutely do well this season with Marmoush and Haaland. It will be absolutely massive. AK, thanks for joining the stream. I'll take all the other comments as well जो छूट गए थे. I'll definitely do that. Man United and Man City have expressed an interest in Gianluigi Donnarumma. Both clubs are tempting to him. Has even discussed a possible move to England in recent days. It's a link that I like, but realistically, we have to sell Onana first to 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 be able to afford that 40 million for Donnarumma. Even if we are clear on PSR, right? अगर भी हम PSR पे clear हैं at this point, we have how many 141 million clear of PSR कि इतना तक का आप लॉस ले सकते हैं. But already 60 and other factors have already, like 60 million already इसके कुनिया पे जा चुका है. 60 million most probably एम्बुएमो पे जाएगा. We need to sell more players to be able to afford. Right now हमको prioritize करना पड़ेगा players at this point. I think if you're looking at Anthony's sell, then Anthony will go around 30-40 million पे अगर जाता है. Rashford, I don't know if we'll be able to sell him. So we'll have to keep Rashford and again loan him out. I don't know if we'll be able to sell Sancho. Sancho again loan पे जाएगा unless some Syria clubs absolutely come from. So context समझना पड़ेगा कि we need to be able to afford Donnarumma. If we get him, massive. We need a massive personality भाई गोल पे. We need an absolutely massive personality जो first of all वो random mistakes commit नहीं करेगा. Someone who's safe on the ball, who's safe in the hands, ball parry नहीं करेगा box पे, so that we concede those absolutely shitty goals, right? अगर वो situation में नहीं आएगी. So if we sell players, then we might be able to fund this transfer. Else, absolutely not. ये नहीं होने वाला है. Garnacho money will go to Gyökeres. I would like that to happen. मेरा पॉइंट है कि अगर हम स्ट्राइकर नहीं ला पाए इस सीजन, वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी ऑन अ मिडफील्डर या फिर अनदर सेंटर बैक. ये दोनों में एटलीस्ट वी नीड अनदर फ्यू ऑप्शंस एज ऑलरेडी अंशुमन mentioned. Donnarumma has one good half season with PSG, so no point of signing him in my opinion. That's too high price. If you get him below 30, get it. Donnarumma, yes, I mean last 2 seasons से अच्छा ही रहा है. I think he is one player that can be clutch at moments, but I would prefer Emi Martinez right now at this point rather than Donnarumma. But
That's what it is. Overthinking. गया इस बार पेप, मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है. I don't think so, man. Pep will do bad. I think Pep समझ गया कि what he needs to do right now with the signings of Ait Nouri and with the signings of Reinders. We will see Guardiola coming back to the centre back position. I think City will play 3 at the back इस सीजन पे. यही 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 मेरा प्रेडिक्शन है, यही मैं देखने वाला हूँ at this point. Thank you so much for everyone who has joined the stream and जो देख रहे हैं. I'm gonna take a lot of the other comments जो मैंने नहीं देखा है. I hope Abhishek Padiyari, you are in the stream. If you're not, then obviously I'll still take the comment. Ange already knew he might be sacked, and he said that in season 3 the main character gets killed. Yes, fair enough. थॉमस फ्रैंक क्या कर लेगा इन साइनिंग्स, नहीं की आधा टाइम तो डिफेंस इंजर्ड रहता है, किसको खिलाएगा? बेन डेविस भी इंजर्ड रहा है भाई. बेन डेविस हार्डली हैज प्लेड 12 or 13 games every season. So I think Ben Davis is not the answer for sure for Spurs, but definitely. Ange के decision पे I think Destroyer was saying now bad decision, winning a trophy with Spurs and winning one with United at two completely different things. He won Spurs a trophy. Fair enough. I think Spurs winning a trophy after 18 years. 18 years, right? Huh, 16 years, I think. 16 years they won their trophy, right? So fair enough. नॉट मी बोल रहे हैं पेप एंड चेकबुक हैव मैच मेड इन हेवन. एक तो बात चेकबुक की भी है, नॉट मी. I don't know if I should call you not me. Do let me know your name. I definitely like to address people with your name. Onono is here. So Onono, when I've seen him chats, like when I was in Vivek Bhai ka channel and all, and Onono, one of the best comments and the best DP, bhai. One of the most funniest DPs ever, bhai. Onono, I love you, man. What a DP. मेरे को इतना मजा आता है वो DP देख के. Always crack when I see that DP. ठीक है. Thanks for joining the stream. Hope you have subscribed the channel and hope you can join our Discord server. I know Ketan hai. I know, man, but I like to call Onono, man. Vipra is here. Thank you once again for joining. Gaurang, thanks for joining the stream. Thank you so much. Hope you have subscribed the channel. Hope you like the setup. Hope you like whatever we are doing. Anshuman Bhai and me had a fantastic decision today in the morning. यहाँ सुबह हो रही है. ठीक है, it's 10 a.m. right now. Thanks for joining the stream. When will we hear Mbuemo? Here we go. So I think we need to understand कि first bid reject हुई, right? 45 million plus 10 million की. First bid was rejected. Next bid will go around 60 million. Now 60 million की bid जब जाएगी, right? I think that's the perfect price that Brentford is looking. And that's the perfect price that Mbuemo will go for considering the season last two seasons. हम इस सीजन के बारे में बात करके बोल रहे हैं कि नहीं इस सीजन ही परफॉर्म्ड वेल, दैट्स व्हाई उसकी प्राइस टैग ये नहीं, उसकी प्राइस टैग इसलिए नहीं है. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई Mbuemo is really highly rated. Ivan Toney was the talisman of Brentford. When Ivan Toney was he got messed up with that क्या बोलते हैं the whole scandal, right? Fixing scandal, right? He was banned. Who took over the mantle? By Mbuemo. किसने Yohan Wissa scored 20 goals this season. Who was one of the main reasons why Wissa scored 20 goals this season? It was Mbuemo. So Mbuemo ऐसा नहीं कि personally he will score goals. Mbuemo आपको physicality provide करता है. Mbuemo आपको provide करता है that uh, fluidity in tactics कि वो R10 भी खेल सकता है, विंग बैक भी खेल सकता है, विंगर भी खेल सकता है, समटाइम्स एज सेंटर फॉरवर्ड एज वेल. सो ये टैक्टिकल वर्सेटैलिटी मॉडर्न फुटबॉल में अपने को चाहिए. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 दिन में हो जाएगा ट्रांसफर. वीकडे है, वीकडे में सारे ट्रांसफर डील्स होते हैं, वीकेंड्स पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती है गाइस. सो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर ट्रांसफर्स ऑन वीकेंड्स. इट डजंट हैपन लाइक दैट. मंडे को शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट की काम, कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशन का काम. आई थिंक माय मोस्ट प्रोबेबली बाय वेडनेसडे वी माइट हियर the news. I think 60 million pounds will be enough for Mbuemo, and Brentford will accept it. 60 million is absolutely his value. उससे ऊपर ना जाएगा, उससे नीचे ना जाएगा. एंड ब्रेंटफोर्ड का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप कुनिया को 60 पे कर चुके हो तो हमको भी उतना पे करो. सिमिलर प्लेयर प्रोफाइल है एंड सिमिलर नंबर्स है उसके इस सीजन एज वेल. सो एब्सोल्युटली. एंड व्हाट एम्बुएमो के साथ आप ये गारंटी डेफिनेटली ले सकते हो कि Mbuemo will not just improve the squad overall, he improves the players around them. We will see a different Ahmad if Mbuemo is here. So वो डिफरेंस दिखेगा. मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ. This is not waffle. We have prime examples of Yohan Wissa, even that Lewis Potter. ये सारे improve हुए हैं ब्रेंटफोर्ड में. तो यही रीजन है, right? I didn't even know about it a year ago. Now this is big. कौन सी बारे में बात कर रहे हो केतन? द गाय वन सेड ओलिसे का औकात नहीं है 70 मिलियन. ही सेड द सेम फॉर कैसेडो.
ओके विप्रा बोल रही है अंशुमन हर चीज को आर्सेनल में क्यों? देखो बैंटर तो होता रहेगा भाई विप्रा। सी बैंटर होगा। सी विप्रा, आई कंसिडर एटलीस्ट मी, आई हैव बीन वाचिंग फुटबॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स, राइट? आई हैव बीन वाचिंग फुटबॉल सिंस 22 इयर्स, राइट नाउ, राइट? एंड मेरे हिसाब से my one of the biggest rivals when I started watching football was Arsenal, right? तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल टेक अ डिग ऑन आर्सेनल एज वेल। बैंटर एरा भी रहा है उनका, सो अभी हमारा चल रहा है। सो इट्स ऑल फेयर मैन, दैट्स हाउ इट शुड बी। बट as long as फुटबॉल डिस्कोर्स अच्छा बना रहे, एब्सोल्युटली फाइन मैन। Ketan, what is this Discord thing? Everyone has Discord. Yes, people have moved on from what I mean. See, I am 34 years old as well, but मेरे को भी time लगा from moving from WhatsApp to Discord. Discord is fantastic. Discord is a great platform. I think you should join it. Yes, subscribe. Thank you so much. कृषाणु बिंगो खेले क्या? एक बिंगो खेले क्या आज? खेल सकते आई थिंक आई चैट पे काफी लोग हैं। आई टेक लॉट ऑफ कमेंट्स। थोड़ा ट्रांसफर्स के बारे में बात भी करते हैं। What's going on? I know Words ka deal is in a bit jeopardy right now because Leverkusen is not accepting playing hardball. But our Liverpool fans, if you're watching, I think definitely the signing is going to go through. Oh, you have made your own channel. Great man. Yeah, Ketan, I made my own channel इस time पे, but that doesn't mean कि हम विवेक भाई के साथ नहीं कोलैब करेंगे. We'll do. आर्सेनल का एक अलग सेशन होने वाला है. We're gonna do it. Um, Ashok, thanks for staying for the stream so much, so long, man. I really appreciate. We are signing players from Wolves after 51 years. That's a massive stat. Who was the last player, man? Who was the last player that we signed from Wolves? That is interesting. I'll note it, man. This is fantastic. Thanks for this. This is tweet worthy. 51 years for after. Okay, that's interesting. Fair enough, man. Thanks for this comment. Everybody gets infuriated when the team doesn't get banter. Otherwise, key and exactly, man. अरे अगर आपकी टीम बैंटर हो रही है ना, अगर आपकी टीम बैंटर हो रही है, आप रेलेवेंट हो, इट्स ओके। चेल्सी के साथ कौन बैंटर करता है मुझे बताओ? राइट नाउ एट दिस पॉइंट, नो ऑफेंस टू चेल्सी फैंस, हु इज बैंटरिंग विद चेल्सी राइट नाउ? नो वन। ठीक है, अरे बैंटर हुआ तो ठीक है, दिक्कत नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट में भी आर्सेनल को ला, मैं भी करता हूँ भाई। नो आई एम किडिंग, बट डेफिनेटली आई मीन ठीक है यार। दिस आई मीन जो इतने टाइम से फुटबॉल देखते आ रहे हैं, राइट? बैंटर्स आर अ पार्ट ऑफ इट, राइट? वी शुड नॉट बी टू इतना भी खो जाना नहीं चाहिए। बैंटर है, बैंटर की तरह लो। बिल्ड अ थिक स्किन मैन, इट्स ओके। यू वॉच नेशन लीग्स कंसिडर एज अ मेजर टूर्नामेंट? बिकॉज आई डोंट। मैं भी नहीं यार, नेशंस लीग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, पीपल शुड फोकस ऑन द वर्ल्ड कप, द क्वालिफायर्स एंड द यूरोपियन क्वालिफायर्स। और भाई give the break to some of the players, man. These players, the same top players are playing 38 games per season. फिर फैन बेस भी और क्लब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डोमेस्टिक कप्स भी जीते हैं, लोअर टियर डोमेस्टिक कप्स भी खेले हैं, फिर आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, अब तो क्लब वर्ल्ड कप भी आ चुका है। हाउ मच गेम्स विल दीज प्लेयर्स इवन प्ले? And are the fan base and is the fan base even of many clubs even ready to bench some of your important players in most games? No. तो आपको आपके फेवरेट प्लेयर्स भी देखने हैं हर सीजन, सारे मैचेस में देखने हैं, लेकिन वो फिट भी चाहिए और एंड दे नीड टू परफॉर्म 100%. This is not how it works. If teams right now start adapting like the previous days, that they need to play their youngsters in the Carabao Cup, we will see a much more better fitness range of a lot of the players as well. Ashok, Jim McCallog in 1974. Thanks for the stat. 51 years ke baad we are signing a player. So from Wolves. Zenotron is here. Thank you so much for joining, Zenotron. Right now, Anshuman bhai, he left, but he was there. But thanks for joining the stream. I hope you're doing well. Ketan, do you think the words Amorim said, good days are coming, will be our table finished this year according to you? Gaurang, what I would say around the stable this season, right? This season is a stark reality of the state of the squad overall from a quality standpoint, right? From a quality standpoint, this is the state of the squad that we have. That some of the players absolutely lack the mentality to take it to the next level. आप Hoyland ले लो, आप Garnacho ले लो, right? Garnacho is definitely right now leaving, right? With Hoyland, I think with Hoyland, Syria के clubs interested हैं. So this is how it is. So we need we need that step up right now in terms of player quality, and we need to understand the fact that a manager had come with his own new system beat season mein, and does not have the players who can play that system.
आप सिस्टम छोड़ दो. Even if this players used to play the same 4-3-3, right? We have seen the same issues. Midfield absolutely open because some of the players don't even have the legs to run track back. आपके Casemiro ले लो. uh, United fans, a lot of fans might think कि Casemiro might do well for us. He has done well for the first season, but I don't think so. It's gonna. He doesn't have the legs to still perform in the Premier League at this point. And मैं ये लाने वाला था यहाँ पर, right? Chat आप बताइए, who are the potential buyers right now for Casemiro? He's currently on a 350K per week salary. Only 1 year left in his contract. Are we seeing a situation कि Casemiro will just leave after the contract ends? Yeah, do you realistically see a possibility कि Casemiro might be sold? And then I'll take some comments right now. Last time we paid 60,000 pounds. This time paying 60 million pounds. Fair enough. Fair enough. Sunny Paswan, thank you so much for joining the stream. Hope you subscribe to the channel. Anshuman Bhai The, I think if you are there, you know it. But thanks for joining and hope you have subscribed the channel. Only Saudi, absolutely agree. Saudi is the only place where he can go and someone who can afford. Absolutely. Zenotron बोल रहे Casemiro will continue. Yes, ideally, I would like Casemiro to go to Saudi, but most probably, realistically, right, he will just die the contract down like the likes of Ericsson and Lindelof. So also we have to understand that this time, when Ericsson, Lindelof, Johnny Evans, when they left the club, right, they cleared out close to 270,000 wages per week. So we have a wage bill right now absolutely sidelined कि हम कोई प्लेयर लाए तो हमको उसको यूज कर सकते हैं उस पर, राइट. 1 year plus extension plus lower salary, nahi man, I might not take. I have a I have a different viewpoint in this. I think Casemiro, massive respect to the player, fantastic player, what a legend. Agar we have to start a rebuild, right, we cannot start with Casemiro. Let's be absolutely honest. So मैं नहीं करूंगा यार. I might not take this option. By the way, thoughts on Kepa going to Arsenal? Great question, Bipra. Thanks so much for getting this. I wanted to talk about this. Kepa to Arsenal is a fantastic deal. And I mentioned this yesterday in the stream as well, right? एक तो 5 million release clause. I mean, what the hell, right? Correct me if I'm wrong. That's the whole deal. Also, Arsenal fans and a lot of fans need to understand that they need to think football wise कि Neto जो उनका backup goalkeeper था, right, on Arsenal, is going back to Bournemouth, right? Arsenal need a backup goalkeeper, and who better than Kepa to be the backup? Considering, why I'll tell you, Raya is not your regular keeper जो कि सब box में खड़ा रहेगा and will just do, like, will just save. No, it doesn't work like that with Raya. Raya is part of that whole positional football Arsenal plays from the back. So he plays from the back. अगर Raya को injury हो जाती है, there is no goalkeepers left for Arsenal. So this deal is absolutely brilliant in my opinion, and this deal will absolutely make sense. Prathamesh is in the chat. Thank you so much, Prathamesh, for joining the stream. अब तो समर में रेस्ट मिलेगा ही नहीं प्लेयर्स को. यूरोज, नेशन लीग, क्लब वर्ल्ड कप और उसके बाद अल्टीमेट वर्ल्ड कप एंड फिर क्लब फ्रेंडलीज. I tell you, man, I swear, man, I swear. Imagine Bruno Fernandes, right? जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजर्ड होता नहीं है, ठीक है, क्रॉस माय फिंगर्स, ठीक है, not jinxing it, but some of the players who don't even get injured, like आप Bernardo Silva को ले लो, right? And why do you think Bernardo Silva absolutely died off this season? He played mostly every game last season when they won the championship. Then he played every game for Portugal in the Euros. फिर टाइम ही नहीं मिला. He also took part in the pre-season. फिर पूरे सीजन भी खेला है उसने. रेस्ट कहाँ है भाई प्लेयर्स को, right? Players cannot perform in the top levels if they don't get the time to recoup. And recently, I remember when Mo Salah एक इंटरव्यू दिया था, राइट, एंड दैट इज अ मैसिव पॉइंट, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन Mo Salah gave that interview to BT Sport, I think now it's TNT Sport, right? I love that statement. What he mentioned was कि the club culture is such right now that we, at least as the senior players and individuals, make sure that since we are playing every 4 days now, we we tell the young players to come with us and take the cold shower or cold bath, ice bath. क्यों? You cannot afford to not do that because you have another game
in the next 3 or 4 days. So this culture is also coming right now. But having said that, this is too much for the players to take right now. Absolutely too much for the players to take right now, and it does not make any sense. So yeah, no, I'll take some more comments at this point. Ketan, the pro dog in Yamal. Okay. Hi, thank you so much, the Pro Dog, for joining the stream. I hope you subscribe to the channel as well. Really appreciate you join. We have to sign Mbuemo, Gyökeres, and Emi Martinez. I agree. I agree. So, it's a situation, right, where we have to, but can we? Now, I know with the current PSR rules, we are able to afford Mbuemo and Cunha. Fantastic, right? Now we have to make sure the next deal that happens with Gyökeres will be a multi-year installment deal. Else, there is no way we're signing. Martinez कब sell होगा? Martinez will be only sold if we able to sell Onana. Onana, yes, he has expressed his interest to leave the club, but who are the potential buyers for Onana? But honestly, from a transfer window perspective, if you want ki Emi Martinez, I absolutely agree, man. Emi Martinez is a big personality. We need some big personalities in the club. We need some big personalities in the back line who make sure ki they don't commit head loss mistakes like the ones that Onana has made. Some of the mistakes of Onana, if you go and check the stats, right, you will see that the errors leading to goal are very less for Onana. And आप बोलोगे कि नहीं यार, Onana has made so many mistakes. Exactly, Onana makes those mistakes happen from other defenders as well. So that we won't get with Emi Martinez. I know the last season, like last game, he made that mistake. But with Emi Martinez, you will get that personality, and we need someone. Absolutely, we need someone. Prathamesh, I think Wirtz deal can fall off. There is a yeah, man. There is a possibility, man. There is an absolute possibility. Uh, Correct me if I'm wrong. The first bid that went for is what 135 million. Then it was 115 million. Still Leverkusen playing hardball. The clubs from Bundesliga will always play hardball, Prathamesh. Liverpool might have to overpay to get Wirtz, but with Wirtz, you're getting a generational player. Make no mistake, and if all the new subscribers who have joined the chat today, if you have not checked out my video on Florian Wirtz, I have made a full player profile video on Florian Wirtz. Even as a United fan, this was for all the Liverpool fans. People need to understand that what FSG is doing right now is absolutely fantastic. The signings with Kirkes and Frimpong, and now if they might have to overpay for Wirtz, I would still go for it because he's a generational player. What a fantastic talent. The IQ is next level. I cannot stress much how Wirtz will absolutely transform Liverpool. You guys have to go for this player. But if this deal might not fall off, I think the player agreement here, player wants to move. It's a new era going on at Leverkusen. New manager, new structure, new players. Xabi Alonso has left. Some of the best players have left. And why won't Wirtz and Frimpong like to reconnect again? I think this deal might not fall up, but जिंक्स नहीं भाई, उन्होंने 113 मिलियन पाउंड्स की भी बिड रिजेक्ट कर दी. मेरे हिसाब से 125 मिलियन, आई थिंक 125 मिलियन, आई थिंक they will accept it, man. I think Wirtz and his agent will try to push this deal to make it happen. But and as United fans, I think, right, we United fans have been there, right? We have been in long transfer sagas before. हम महीने वेस्ट कर दिए सर्जी मिलियनकोविच सैविच पे, वी कुड नॉट साइन. आई डोंट वांट यू गाइस टू फॉल इन दैट सिचुएशन. यू गाइस हैव टू एक्ट रियली रियली क्विकली. सनी पासवान बोल रहे हैं, सिंस न्यूनेस माइट बी लीविंग, व्हाट स्ट्राइकर विल लिवरपूल गो फॉर? गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. लाइक टू गिव यू सम एस्पेक्ट्स ऑन दिस की आई वुड रादर प्रेफर Nunes to stay, right? And Jota to leave. And why? And I'll give you a reason. As great player Jota is, right? He has missed close to 98 games for Liverpool. That's 3 seasons we're talking about, 2.5 seasons, right? Uh, is this acceptable? Absolutely not, right? How much good of a player you are, right? See the situation we had with Mason Mount. Mason Mount hardly few played like 10 to 12 games over the past 2 years. Money wasted, wage wasted. It doesn't work like that. I mean, I think Liverpool need to sell Jota and then stick with Nunes as a backup. But I think Nunes wants to leave as well. But that's what I would go for. That's what I would go for. We might sign Wirtz in the next window, but no, Cristiano. No.
मेरे हार्ड वर्क पे ऐसे पानी मत फिलाओ on the video. No, I'm kidding, but I don't think so. Words is gonna happen, man. I'm 100% sure. For even from a United perspective, I'm saying words will happen for Liverpool. Mystique is here. Thank you so much for joining. Hope you have subscribed to the channel as well. आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, definitely join the Discord server. Definitely, what do you think about the situation going with Mbuemo? I think we'll just sign him definitely. Uh, 135 euro rejected by Paul Joyce. Okay, fair, fair. Sesko, Arsenal, Gyökeres, United, ATTK, Chelsea, Liverpool, Isak, maybe. Oh, that's a great point, but I don't think so. See, with Newcastle, right? It's very difficult to crack deals with Newcastle. Past में हम देख चुके हैं, right? And why would Newcastle want to sell Isak? Why would Isak even want to leave currently? Because unless it's a massive club, right? And a massive deal comes through, 100 million, I think Isak 90, 80, 90, 90 से नीचे नहीं जाएगा. If Sesko is around 80, 70, 80, Isak तो 90 पे जाएगा, right? That's current valuation. I mean, valuation मैं decide नहीं करता. Valuation is based on the demand of the players, right? So, and we have 237 people watching on Twitter. People who are watching on Twitter, please come and join YouTube. Subscribe to the channel. I can take your chats there, right? But thanks for all the people who are still on YouTube as well. Really appreciate. With ATTK to Chelsea, I don't know what I should call you, SDD. You can let me know your name. I can address you by the name. But ATTK, he's still very young. He's still not that finished product. And I'll give you a stat. He's one of the worst. He has one of the worst finishing conversion rates in Europe among some of the strikers that are linked. So if ATTK Chelsea is going for fair play to them, I don't care. It's Chelsea in the end at the end of the day. Swapnil, thanks for joining the stream. Thank you so much. Chelsea getting Gittins from Dortmund. Why don't Dortmund sign the golden boy Sancho? They tweeted about him relentlessly. Absolutely. So, and they used to like troll United, right? Around how Sancho used to perform when he was on the loan deal. And I'll tell you a reason. When Sancho and people said that Sancho performed really well at Dortmund when he went to the loan. No, let's get the facts straight. Sancho had few performances that were very good. Or hardly in those 6 months, he got 3-4 assists and 4 goals. That's it. That's what he provided for Dortmund across all competitions. So let's be absolutely clear. Like initially when Dortmund started for like Sancho started for Chelsea, he made 3 or 4 assists and then gayab ho gaya, right? This is what you get with Sancho. So I don't think so Dortmund will get Sancho. I think Sancho most probably likely I would I would like Juventus comes into the picture for Sancho and he will fit perfectly right there. कैसे हो Wharton Paglu भाई? By the way, Baleva better. You're calling me the Wharton Paglu? Yeah, absolutely. I mean, see, I like Wharton. I think we discussed about this with Anshuman in the stream, right? I'm a big fan of Wharton, but what I'm concerned about is the injury situation with Wharton. 19 games he missed. I had showed this stat already. 19 game he had missed. So I think that's where I'm worried about, man. I'm gonna take a lot of comments अभी miss हुए हैं. Definitely do join the Discord. यहाँ कृषानु बोल रहे हैं. Bro, PSG can also go for Gyökeres if we do not act fast. PSG they might go for Gyökeres, but I think they also need the funds. They made some massive deals last season, right? They bought Kvaratskhelia, they bought Juan Neves for a lot of money. Do they really have the funds right now? That's why I think the links for Donnarumma sell is going on right now. But fair enough, man. If Absolutely, I agree कि अगर यूनाइटेड नहीं जाती तो if Arsenal also cannot nail the Sesko deal, they might go for Gyökeres. So we might have to absolutely nail this deal absolutely soon. Yes, I'll take some more comments. कैसे okay, I've taken no man, not Isak. We are signing 200 million players exactly. मैं realistically Prathamesh, I don't see you guys signing Isak as well. He'll be a great player for you, but 100 million से नीचे नहीं आने वाला. I think you should guys focus on words. You have goal scorers in your team. You don't have to worry about this. Once Words is here, you is easily talking about 20-25 goals and assists the whole season because he has the numbers. He has done it before. Yeah, and Chelsea getting Gittins. I think Swapnil Gittins is a fantastic signing. What I've seen from Gittins, मैंने जितनी देखी है, really good, dynamic player, very direct, right? England के लिए भी call up आया है उसको, right? Very skillful, direct है. I think those direct players will do very well at Chelsea, and
at Premier League. It's going to be a great signing in my opinion. Prathamesh बोल रहा है, I really think if we will get someone an unknown quantity as a striker, maybe someone very underrated, right? Maybe whom are your options, underrated options apart from all the top options? I would like to hear from you, and then we'll discuss on this. So, you think Gyökeres will be a success for us? How many goals would you expect from him with Cunha, Mbuemo, Amad, and Bruno? Great question. Great question. So I'll take this question. Right. I'll give you some records of Gyökeres. Right. With Gyökeres, like Victor Gyökeres, 69 goals in 66 games. Right. He's the highest scorer across all top leagues in the world. Strikers mein. If you even decrease these numbers by 30%, right? These numbers are absolutely good enough for any team to take it to the next level. And Gyökeres is a very very clinical striker. Yes, there is an argument ki yes he was nowhere around, but like when he started performing, now he's in the mix. But एक stat hai that when he was in the championship as well, he had scored 22 goals and like 5 or 6 assists. So ऐसा नहीं कि one season wonder. He has been performing for the past 3 seasons. So any team that gets Gyökeres right now will absolutely nail it. Why is no one going for Theo if he's available for 40? Al Hilal pay करने के लिए वाली थी. I think something is fishy with Theo because player of that quality can play for absolutely, man. Theo Hernandez. I mean that left back. He has fantastic quality, like fantastic feet, amazing. Like he makes great runs. He gets into that box in the final third as well. I don't know why no one is going for him. We bought Dogu for 30, but we did not go for Theo. I think with Theo there is a problem with injuries. That becomes a gamble there. I think that's where it all boils down. Bipra bola, hypothetically, if we sign Brandt from Dortmund, will it be perfect for Ode backup? Bipra, good question. Will Arsenal go for that backup right now for Ode? I think you guys are focusing on a striker and a left wing right now. But if you ask my opinion, why would Julian Brandt come as a backup because Julian Brandt is a starter at Dortmund already. So I think those players will stay in the Bundesliga unless they become a starter for any Premier League team. I think, in my opinion, if you should go for a Saka backup, you have in Nwaneri, but I see Nwaneri as more of a Odegaard ka backup in the future. Theo wants 350k plus because it's Saudi. अगर कोई European club आता था, I don't think so he's gonna go for that salary rate. He's not gonna go for that. Adeyemi is a fraud. Adeyemi is an interesting player actually. I think what I like to call Adeyemi is called an enigma. Like fantastic ability, great pace, eats the grass. Like, but वही है final third पे वो हगने वाला उसका है. So he has that ability. I used to be Wharton Paglu, but not after his injury record. No, fair enough. I mean, we all used to, right? But what a performance against City as well, right? See, when we talk about Wharton, again, it might be a gamble, but um, player quality बहुत ज़्यादा है, right? Fantastic player quality. Beats the press, knows the formation in and out, right? Young है, left-sided central defensive midfielder. कितने हैं market पे? Very few, right? So maintaining the position and transition पे खेलने के लिए Wharton is fantastic, but again, if he has that injury in him, investing so much money would just derail our season, and I agree with this. PSG don't play with an out and out striker, and Tangiolic said Campos does not want Gyökeres yesterday itself. Exactly. With Dembele, see Dembele in that position scoring 33 goals and 13 assists this season. 33 goals and 13 assists, Dembele. Man, I remember it out of my head. As playing as that false nine and unlocking the lights of Due and Bakula, I don't think so. With Gonçalo Ramos as a backup, I don't think so. For PSG, striker might not be the priority. That's my point lies. Where Wharton does not have the physicality and availability, what Baliba has. Baliba any day, man. Baliba any day. Baliba has been absolutely monster. What a player. I mean, I'll just show the stats, right? I'll just show the stat if everyone is still watching, right? I'll just like to show the stat, right? Look at Baliba's, man. I know the transfer market value is based on what it should be, but it's way higher. But you see 95% successful dribbles. And this is not per 90 stats. This is the whole season. 94% ball recoveries. Dispossess भी नहीं होता player.
strong, physical. Like he's absolute monster. Any team that gets Baliba will absolutely benefit, right? Absolutely benefit. बहुत सारे comments हैं. I'm gonna take them slowly right now. Let me switch my layout. Right, great. Okay. Next comment है Paris Saint-Germain insisting to get Lia Zabarni. So they're not looking for striker right now. Fair enough, fair enough. But you never know. Hi Swam, thanks for joining. Maybe you missed the stream with Anshuman, but you can still stay. We're talking transfers as well. Jackson, Nicholas, Jackson, Nkuku, Omoridion. Okay, I think you're talking about Chelsea players in the chat, right? Even if Gyökeres scores 25 this season, exactly. वही मैं बात कर रहा हूँ. If even if Victor Gyökeres he nets in 30% of what he has done this season, it's still good. It's still good for any club. Bhai, why aren't people understanding that these numbers are not just on one season? He has consistently done this over the past 3 seasons. Pratmesh बोल रहे we got Frimpong for 29. You think we are also trying to recoup a bit of transfer fee from this words deal? Yes, I think that's what it is, right? Great point, huh? Great point. I think what's happening with words is Leverkusen already sold Frimpong for less. That's why one of the reasons that they're playing hardball on this one. कि तुमको तो मैंने 29 पे बेचा है for Frimpong. Why would we absolutely sell you for less right now? We can absolutely take 150 million package overall with Frimpong and uh, words. That's a great point, man. It could happen, man. Theo has a head loss at times. I agree. He has an injury as well. He just looks disinterested. Fair enough, man. Fair enough. गौरंग बोल रहे हैं वानिया विलंकोविच सैवेज दिस बीस्ट विल बी अ बेटर गोलकीपर साइनिंग देन एमी मार्टिनेज गुड पॉइंट देयर Vanya Milankovic Savic very underrated, right? Good shot stopper, but under this Amorim system, does he play from the back? Is he good on the ball? Maybe not. I mean, that's the reality. For me, I'm a traditionalist in terms of football. पहले मैंने देखा हुआ है, right? A goalkeeper's primary job should be to save, right? But whatever comps I have seen of Vanya Milankovic Savic, obviously we don't see him week in week out, right? Comps से ही देखेंगे. He has that tendency to parry the ball in the box like Onana. Hey, and he's one of the and last season भी I think 3 से 4 he has errors to goal as well. Great keeper, not gonna lie. Better than Onana any day. But I would prefer Emi Martinez, man. That's my opinion, but fair enough. All Arsenal needed a CM and a left back. If you know, you know. ये trolling शुरू हो गई है. But but all jokes aside, what Arsenal are getting with Zubimendi is fantastic, man. I mean, someone who can control the tempo deep down the pitch. He has touches in the box as well. आप उसके stats जाके देख लो. He has good interceptions and duel winning stats as well. So when people say he's not physical, no, I think smartness outrights physicality. He's smart player. उसके long ball के stats भी बहुत अच्छे हैं, which means he'll be able to release the likes of Saka and also. It's a fantastic signing. But they definitely need a new left back there for sure. Who would have a better first season if you had to predict? Sesko at Arsenal or Gyökeres at Man United? Good question. I think Sesko will have a better season than Arsenal. Why? Because Arsenal as a squad is much more stable. Has played under a manager कितने 5 साल से 6 साल से खेल रहे हैं under Arteta, right? They have been playing, so the system is pretty stable. The core of that team is pretty stable at this point, right? So I think Sesko will be in a much better position to perform than Gyökeres. Gyökeres will be part of that whole rebuild. Absolutely new atmosphere, new set of players that still aren't like adapted to this formation. So he would be expecting those balls where he's in the positions to score, but abhi tak wo players ki IQ develop nahi hui to make that pass, right? So I think Sesko will have a greater, bigger, better season than Gyökeres this season, but next season you might never know, man. But that's that great question though, fantastic question. Bipra brought up Brandt. You know, Klopp wanted Julian Brandt, but Edwards forced for some random. I like Brandt as a player, man. See, I'm not nowhere I'm denying Brandt is a bad player, but considering Odegaard right now, will Arsenal take him? No, but Brandt, I love that player. Fantastic feet, fantastic first touch.
flair player, right? I think one of the few flair players we have left. I think that's what it is. Yeah, it's a great player. I absolutely agree. Dombia is a FIFA. Bhai, Sado Dombia. Sado Dombia, if you're talking about Sado Dombia, FIFA, absolute FIFA legend, man. I used to have him always. I personally think we should have gone for either Ayar Zabi from Bournemouth, okay, or Milankovic from Forest as defender, or any of Inacio or Diamande from Sporting. That's a fair point. Milankovic has had a fantastic season. Milankovic and Murillo made a partnership that, in the first half of the season, at least for Forest, made sure that they qualify for Europe, at least in on some capacity. Finishing in the top half, that's a great point. I like this. This is where, see, the likes of Bournemouth and Brighton, they make smart signings in terms of scouting, right? So I think we need to follow that as well. Ivory Coast duo of Gervinho and Dombia. Oh my god, trust me, man. Gervinho, Dombia, and there was another striker, right, at that point. Yes, Ibarbo, exactly, Victor Ibarbo. Baliba is the Conte and Yaya tournament region. Baliba, man, Carlos Baliba is one of a kind of player. Like, if Brighton still gets a hold of him this season, Brighton even might finish higher this season. Absolutely. Aniket is here. Thank you so much. Bhaiya, to be honest, realistic transfer and Kunya Mbuemo Gyokeres and a backup keeper. Fair enough. Fair enough. I think this is the ideal window. But for me, right, let's say if we cannot get a striker this season, right, I at least want a midfielder. मेरे को चाहिए. I don't want Casemiro and Ugarte to play in that pivot, neither Bruno and Ugarte to play in the pivot. I want a specialist LCM to play in that position, taki we can control the tempo of the game. We tend to lose the ball often. I mean, I know Anshuman and me had a difference on that opinion, but that's what I would think on that. But what Anshuman was also mentioning is absolutely correct, that in this new system, we need more center back backups, क्योंकि in this system the left center backs and the right center backs, they वो चढ़ के खेलते हैं. So if they go higher up on the pitch, right, they will need to be really really good in the position. And do we have enough players to do that? No. So realistically, this is the transfer window from an attacking standpoint, obviously, because we lacked the goal scoring knack of scoring goals. I want that fear factor back at Old Trafford, man. Absolutely. Mainan and 18 million is still my opinion. Yes, I mean, he did have few bad games, but Mainan is still a really good keeper, way better keeper than what you have with Sanchez, man. Anyone at 18 million is steal, absolutely. Talking about 18 million steal, Mazraoui, right? Mazraoui is a steal, right? Look at that. Look at that deal. Fantastic. Donnarumma is being discussed by both Manchester clubs for the negotiation. I think, yeah, we talked about this. We'll see, man. We'll see. We'll see. It all depends on the sell. Lamens or Trafford would be a great as. James Trafford is a good option. James Trafford, I think Burnley a keeper, right? He had a good season, man, when he was in the Premier League. I like that goalkeeper. Sometimes we have to think out of the box and check out these kind of players. I think this will work. Consider this: United can make only one signing. Which one will you choose, a goalkeeper or a striker? Okay. Oh, that's a good question. I would go for striker, man. We definitely lacked goals this season. Only 54 goals this season is not even 54, even less. We didn't even cross 50, I think, right? If I'm not wrong. No. Even since we did not score goals, right? That was one of the reasons why some of our goals we considered looked like we have a very poor defense. But we definitely lack that extra edge to win those games. We would not have finished 15th had we scored more goals. Also, the thing with Torino is that pretty much the Crystal Palace of Syria, 10, 11, 12 is where they will finish. There's much pressure on him. It'll be interesting in Europe. Fair enough. But yeah, to be honest, ओनाना से better keeper भी है जिनसा लिंक हुआ है to play position football, but चूतिया है interview देकर और performance. Okay, fair enough. Absolutely, man. Absolutely. You remember that Matic wala, right? I highly rate James Stafford is great. Absolutely agree, mistake. I agree. James Stafford is a very, very good goalkeeper. When he was at Burnley, I mean, Burnley is considered a lot of goals, right? But still, he saved Burnley from embarrassment. I think the similar season once Dean Henderson had. Liverpool got lucky to get Mamadishvili for 30. नहीं तो about, yeah, Mamadishvili was already signed for you last season, right? Oh, so which means that is fantastic, right? This is what I liked about FSG, right?
for the past few seasons. They already got Mamadishvili. Just in case Allison does a thing that मेरे को और wages चाहिए, so there's a contract situation and he might leave for other clubs, Saudi might come. They had also a situation where Kaumin Kelleher was ready to take the step up, but obviously won't start with Allison. So they also sold him to Brentford. So yeah, you got lucky, man. Mamadishvili is a fantastic goalkeeper. Manchester United fan, come on. Thank you so much for joining. I think पहली बार देख रहा हूँ आपको स्ट्रीम पे. Hope you have subscribed the channel. Anshum Rai and me had a discussion for 90 minutes. Then he had to leave. But what a session. Hope you have subscribed to the channel. We would like to support. Stay in the stream. If you have anything to say about the transfers, do let me know. Happy to take the comments. Milankovic was average in Italy. Will still have my doubts on him. Okay, fair enough. Any club going for Oyarzabal? I don't think so. Maybe no. Premier League teams, though, definitely not. Right. Maybe anyone from La Liga, but I think he's going to stay in Sociedad. I think he's kind of a legend there. Mo is here. One thing's for sure, Cunha and Mbuemo supplying Gyökeres will not have a goal scoring problem. Absolutely. Bang on. I absolutely agree. Someone with Mbuemo and Cunha who are coming from a season combined of 35 goals and how much? 15 assists. I mean, even if they do like 30 goals and some assists together, it's still not gonna be good enough because we have Ahmad as well joining the force, Bruno as well, who is very good on the final third. If they are able to supply Gyökeres, we might become a goal scoring machine this season if everything goes well, man. I agree. Ederson will be Ugarte, would be a good duo. What with Ederson is he's kind of a jack of all trades kind of player, right? He's not the master of any one attribute right now. Right now, the current attribute we need at Man United is somewhere um, a center midfielder that can beat the press, a center midfielder that can pass, that can make things happen on the middle of the pitch. Press resistant, basically. Ederson is press resistant, so he might be good, but I don't think so. He's going to. I think he's going to Saudi most probably. So I'm getting any player from Nottingham Forest is risk. In my opinion, the entire team is overformed at once. Obviously, good players, but then we need to wait. Absolutely, I agree. No, I agree in this. We need to see one more season for any players. One player that might actually really go high is Elliot Anderson. He's had a great season. I think the potential was there with Elliot Anderson. And one more player is definitely Elanga, man. What a season he has had. Elanga. What pace. On the transition, he's been absolutely fantastic. Mystic is saying, I think we should have gone for Kepa to replace Bayandir. He's easily better than Onana too. Still, I would want a better keeper as our starter. Fair enough. Absolutely. Our attack was 17th best in the league. Exactly. And like we need numbers. We need goals up front. Then we'll win most games. If you don't score, it's a traditional fact in the Premier League. If you don't score more than 2 goals or at least 2 goals in the Premier League, you're not coming away with any points. By the way, जब मैच देखोगे prediction, I'll watch the match. I'll just chill and watch the match. मैं watch along नहीं कर रहा हूँ इस पे, right? But definitely I'll watch the match and I'll enjoy it for sure. Predictions, man, Spain, brother. तो आप लोग का predictions बताओ, right? Let's see how Liverpool rebuilds after Salah leaves. Salah अभी नहीं छोड़ेगा यार 1-2 साल. I don't think so. He's gonna leave. Okay. ये comment. Watched Hayden Hackney. Yes, Hayden Hackney. Rumors were coming. I would say we sell Casemiro. We might go for him. Watched his clip. Seems a great player already and still has a lot more potential. This is where I'm gonna show something, right? Let me show this. I did make this the slide for everyone. This is usually my setup, right? I definitely bring in graphics for you players, not screen share ki I mehnat karta hu ki I carry all these data for you. I was discussing this, like, obviously. So what Anshuman said, that Hackney could be a gamble, while definitely I agree. What I also would say ki Hayden Hackney has he's a good talent, right? And this is where we might need to think out of the box. ये player अगर किसी और club में जाके starts performing and then suddenly his value is rising up, right? What at least I have seen from Hayden Hackney, at least from the comps, and when I was doing some analysis today, right? Like, look at this, 98% in 90. Let me hide this banner. कब से है वहाँ पे? Okay,
Um, and this is where why did I hide? Actually, it's a great point, right? Potential bias for Casemiro, right? Since there's no bias for Casemiro, Casemiro does not have the legs to play the full season, right? I think it's good that we look at options like Hayden Hackney, चैंपियनशिप का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट 98% इन चांस क्रिएशन एंड पासेस भाई तुम किसी भी लीग में खेल रहे हो राइट इफ यू हैव दीज नंबर्स व्हिच मींस एबिलिटी है राइट you have the ability to take it to the next step right and one of the most important stats is 3% only dispossessed मतलब when he has the ball high chances कि he will not get dispossessed which is a stat that we struggled this season we used to get dispossessed and even under ETH right midfield के position पे like on the in the middle we used to get dispossessed and then counter attack ho jata then we because since we played so high like we used to concede so many silly goals right I think that this is a player that I would definitely like to have as part of my the whole rebuild but it could be a gamble as well man so anything can happen as well uh मिस्टिक बोल रहे हैं कि आई डोंट गेट इट व्हाई एक मिनट मैं एक बार ये कर लेता हूँ लेट मी स्विच द हाँ I don't get why clubs aren't going for Unai Simon. He's a great keeper, sweeper keeper, and a shot stopper. He's a great goalkeeper. 28 in prime, starts over Ryan Spain, fearless and great in penalty twos. That's a good point. That's a good point. If someone like Amorim is looking to play from the back, right, then why not Unai Simons? Fair point, man. I like this point as well. Boro have let go of Carrick with Carrick being there. Negotiations might have been easier. Fair. Next try for Baliba. मैं थोड़ा पहले comments ले लेता हूँ. I think I'm missing some context on what you guys are discussing. Okay, watch Hayden Hackney rumors. Yeah, absolutely. Fantastic potential. I talked about this. So basically, Chouameni for or Wharton. Okay. So I'm बोल 3-1 to Spain. Yeah, I agree, man. Spain will win this one. There's no way Portugal is winning it. Spain is winning this one. Frimpong zips it to Wirtz. Laser pass. Wirtz explodes forward. Skips one, twists another. Absolute. Oh, okay. So they are manifesting, right? And absolutely fantastic manifestation. I think this is what you might need. This is what will happen. Even if you don't get Gyökeres right. With Salah, Frimpong, and Wirtz, you will see that trio working fantastically in that final third. You will see the movement. I'm telling you, I've seen Wirtz most of the games. It's gonna be massive, man. If you get this signing, it's be lethal. उसके बाद वो बेन वाला celebration by Gyökeres. Okay, you're manifesting. You're absolutely. Gyökeres is coming to United, guys. Gyökeres is nowhere coming. What I watched of Middlesbrough is 5 to 10 odd games. Hackney is a very good player, but I think he needs one more move before we comes to United. Absolutely. He from a player perspective, yes, because right now United is not in a situation where Hackney can grow. Hackney can go and grow in the likes of Palace, Brentford, Brighton. Okay. So when he goes there, he will absolutely grow. Then that step up needs to happen. Absolutely fine. Absolutely fine. Fair enough. Yeah, I taking this one. Agree with the mistake. 5 million for Kepa, who was top 10 goalkeeper of the season. Bournemouth finished ninth, but our fans won 35 million. Palace striker, who is not even in top 10. Palace finished 12th. Yes, and this is where I would say, like with John, if you're talking about Philip Mateta, right? John Philip Mateta is a good striker, right? He's a good striker, but the thing is, some players, right? Some players are only great when they are around that mid-table club. No disrespect to Palace, right? Considering where we finished, no disrespect, but we need to also understand that some players might not make that step up, right? So what might happen. If we get Hackney for 15-20 million, let's play the gamble. मैं तो वही बोल रहा हूँ, right? 12 million उसका market value, right? If we go for 15 million, Hackney तो obviously will say yes for United. It's a gamble worth taking if we go for a striker and we don't have funds. If you have limited funds based on what we have left for the PSR losses, I would go for Hackney, man. Carrick-esque, yes, okay. And next year, try for Baliba. Absolutely. For Baliba, it's not going to be just me trying, right? Or like United trying. It will be multiple clubs that will be trying for Baliba, right? Massive player. Man. What a monster of a player. Boro have let go of Carrick, and Carrick being there, negotiations might have been easier. Fair enough. Remember, record of developing young players in recent years have been really bad. Absolutely. If you're talking
if you're talking about United, right? If you're talking about United, um, yes, some of the players have actually done well, like the likes of Garnacho. Yes, obviously he's getting sold because of the attitude and stuff, but they've done decent. If you're talking about Liverpool in terms of getting the young players, I think Trent has come out really well. Harvey Elliott is a good player. I like Harvey Elliott a lot there as well. Um, but yeah, that's what it is, man. We'll do a separate session on academy talents someday. Um, I think it's important to talk about it. On my Discord server, there's a channel specifically for academy talents. I'm going to do a lot of posts there. So do join the Discord. I'll appreciate that. I have a feeling Sekou Kone will be a big thing for us in future. Absolutely, man. That player has the ability, but he's very raw still. He's still very raw. He needs a loan move to Anderlecht on a Belgian league. I think players when they go to Belgian league, like they really up their game there. It's a good league. People don't realize Belgian league is a fantastic league. And वही मेरे को news आ रहा है कि Sekou Kone might just go to a Belgian league for a loan deal. Precisely, Mateta gets chances from Munoz, SSR, Mitchell. How many chances we created for our striker? I mean, Maguire might have received more chances than Maguire has better movement than Hoyland at this point, man, and that's very very poor, man. In our academy, City does best business. Palmer, Lavia, Trafford, Delap, Frimpong, Jamie Gittin, Sancho, etc. City academies they have done well recently. Our academy, I think I can only say three or four players. I think Elanga हो गए, आपका McTominay हो गए, Garnacho, Menu, they have done well recently. That's what I would say. Rishi is here. Thank you so much for joining the stream. Hope you're subscribed to the channel. Anshuman Bhai right now is not here because we had a discussion for 90 minutes, but do stay on the stream. We're talking transfers. Right now, we're talking about some of the academy players. Yeah, absolutely. Connor Bradley. And this is a question for Liverpool fans, right? Prathamesh and everyone who's joining, who's still there as Liverpool fans. With Frimpong coming in right now and Connor Bradley absolutely ready, do you think Connor Bradley is still ready to step up to the big leagues? Yes, in my opinion, I think Connor Bradley is ready to play for any Premier League team. But will he stay in Liverpool going forward? Is a question. Is something that you might need to manage. Is something that I'm very worried about. How do you rate Jared Branthwaite? Okay. This is a good question. Okay. Jared Branthwaite, right? He was valued as how much? 70 million last season, right? Had a good season against with Everton, right? Next, this season he got injured first half of the season and Everton struggled. When he came back, he again formed that partnership with and Michael Keane got subbed off. Like start ही नहीं किया, right? When Brantford came, he and Tarkowski and Mikolenko they linked up. They really had a good season in the second half. So Jared Brantwaite is a left-sided centre back who is good on the ball, who is who can actually put in blocks. He's a good player. But 70 million? No, 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 no. The valuation is wrong. Um, but I like the player. I like that player since last season, but I need to see more, man. I need to see more. But he has that injury knack. He has an injury record. Yeah, he is injured. Exactly. People are saying Mantato will play right wing back in Amorim. I haven't seen playing. No, no. Too soon to say. Too soon to say. Sekou Kone is going to INEOS sister club in Switzerland, from what I've read. Fair, fair. Exactly. Either a Swiss side or a Belgian side is what I'm hearing in terms of loans. So I might have to check again what is the latest development on Sekou Kone. But that's what it is. Gaurang बोल रहे हैं Jonjo Shelby is also available on free transfer, good and long ball passes. No, man. I mean, for whom? For United? No, 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 no. नहीं, नहीं. We don't need. नहीं, नहीं. Those players are past their prime. They're past the Premier League demands right now. Great player. I love the IQ of the player. Fantastic player. ठीक है, Jonjo Shelby. But no, no, not for United. I want to have a future defender like Yoro, Diomande, Inacio, Dillit, Heaven, Brathwaite. Fair enough. I think Anshuman had fairly put this point. Now I think about it, I agree with it that we need backup on every center defender space, because the demands will be so much high that these defenders, at least on the LCB and the RCB roles, they will be stepping up in the midfield to support the pivot, and for that you need real good fitness, right? So that's what it is, man. I agree with this point.
What's your daily stream timing? Why? Oh, so I'm on Eastern time Canada, right? So it depends. If I'm collabing, let's say आज Anshuman was only free at 6 p.m. right? So I started very early on my end. बट यूजुअली थोड़ा रात को करता हूँ लाइक अराउंड नून माई टाइम 12 p.m. अगर वीकडेज का स्ट्रीम होगा, वीकडेज इज माई वर्किंग टाइम, इट्स डे टाइम, तो मैं नहीं करता वीकडेज को ज्यादा स्ट्रीम. वीकडेज आई फोकस, सो आई डोंट ओनली डू स्ट्रीम्स राइट स्वप्निल, आई ऑल्सो डू लॉट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोज like edited videos, stats, player profiles. So I've already done 2 videos. Matthew Cunha ka video has reached 4,000 more views on YouTube, and Florian Wirtz ka video has also reached almost 1,000 views. So do check it out if you have not. So those kind of videos I focus on weekdays, and weekends by I stream when I'm free, I'm not working. But अगर कोई breaking news है, I absolutely take my break from work. मैं stream करता हूँ, but usually noon Canada time. I'm from Canada by the way. 9:30 p.m. Indian Standard Time. So do join my Discord. वहाँ पे I'll give all the updates on my stream. But thanks for asking. Thank you so much. Pablo Sarabia should be a good replacement for Ericsson as a free agent. Oh, that's a good one, man. That's a good. I'm liking Mystique's comments here, right? W comments, man. Fantastic. Pablo Sarabia should be a good replacement for Ericsson as free agent. Yeah, man. If see any quality player on free agent, I'm fine with it. I think I saw one comment, Jonathan David. I'm gonna take it, right? And I've been an absolute advocate. So I'm living in Canada. I've watched Jonathan David play for Canada as well. So as an Iki, I think I saw a comment on Jonathan David. Let me take that comment. Yeah, but hold on. कहाँ गया भाई Jonathan David? जिसने भी comment डाला था, please, definitely. Oh, so your name is Saksham. Thank you so much. I would like to address you with your name, but not me. Okay, that's a good name. Saksham, thanks for staying in the stream. I really appreciate. Thoughts on Aiden Heaven app? Oh my God, I have only high things to say about Aiden Heaven, man. I mean, look at so the games he played, like 3 or 4 games, right? When Aiden Heaven played, I think neutrals and fans both saw the ability Aiden Heaven. Man. So what Aiden Heaven provided in that left center back role, right? He used to press as well, providing that overloads midfield में. Very stable headed player. ऐसा नहीं कि panic situation हो, so his positioning is bad. No, his positioning was also good. And it was so unfortunate he got injured in that Real Sociedad game. He was playing so well. He was playing so well, Heaven. But I think Heaven is gonna do really well, but we need to slowly bring him up. He cannot just start games right away. I think he will be good in FA Cups, Carabao Cups, coming off from the bench when we need backup. And that's what I have. But 1.6 million euros from Arsenal. Thank you, Arsenal fans. I have said this on one of the videos I also did. Thank you so much, Arsenal fans, for giving us Heaven for 1.6 million. That's what I would do. If we're able to sell Luke Shaw, we might go for Theo, I feel. We don't have the funds, man. Theo will ask a lot of wages. Luke Shaw will see. It's a myth. Luke Shaw we can't sell. First of all, Luke Shaw को fit रहना पड़ेगा एक full season. But the thing is, he was fit in the 2022-23 season. Then we offered him a 4-year contract, right? And then he goes away. Luke Shaw, out of the 9 season, has missed a total of 4 to 5 full season in terms of games. I don't know. I don't know who will buy Luke Shaw at this point. I'm worried about this. We just have to just die down his contract. Gaurang बोल रहे हैं कि if we don't get Gyökeres, we'll be going for Ramos or PSG or Mateta, who will be good under Amorim to support the front line. Fair enough. With Mateta, at least we'll get great hold up play, right? And he's a clinical finisher. But we'll see, man. If he might work as well. He's played this formation as well, right? Fair enough. I personally feel David is a bit one-footed. If he watches goals at tap-ins in League One, which is much space, I don't feel he'll work at PL. He will work at PL because I have seen his game a bit dynamic player. Let's forget about finishing, right? Right now with Amorim system is the players, the center forwards, the front three we have need to be absolutely versatile. Can sometimes come deep, right? Can sometimes be on the final third, right? Not a specific target man, right? Now with David, I'll give you a stat, right? I think Jonathan David has had like 59 goals or 20 odd assists in the past 3 seasons. ऐसा नहीं है कि he is a one season wonder. Mo, oh, 2 hour long video. Yeah.
आज stream लंबा चला गया because lot of people stayed. Usually I do like 90 minutes. Anshuman bhai left at 90 minutes, but a lot of people stayed in the chat. They wanted to discuss transfers, तो मैं रह गया यहाँ पे, and a lot of people stayed. But thanks Mo for joining. But मेरे videos 2 घंटे नहीं है, जो the ones I record for the chat who's still watching. My player profile videos, my recorded videos, my edited videos, right? Player profile videos, they're all 7.5 minutes. Because all the information is packed. All the information is packed. Krishanu बोल रहे हैं, people think League One players won't work in play, but what I think is League One players do better. Most Premier League teams and most big clubs, they scout from Liga. Some of the best players have come from Liga, man, recently. So Liga is a fantastic league. I appreciate Liga. Few months back, I watched United versus Youth FA Cup game, which obviously we'll won. Saw Max Dowman. I'm jealous, man. He troubled us great. Oh, man. Max Dowman is a massive player, man. But this is the thing. I also rate Nwaneri very high, but will Arteta give him more time? I don't know, man. But can we get Max Dowman? Let's see, man. Can we rely on Licha considering how many injuries he has racked up in the past few seasons? That's a good question, right? And my answer is no. Great player, right? He's a very good player. But sometimes his injuries are his calling. He he dives into positions way too much and puts himself into those situations where he gets injured. I think sometimes you need that stable head in panic situation. I remember the game when ETH under ETH, right? When we lost to Spurs 3-0 at home, right? 10 men here, right? You're still way higher up on the pitch, and then the third goal happened. And why? Because there was Martinez head loss. So he has that head loss in him. Great player though, fantastic on the ball. I mean, we saw his performance against Liverpool as well. But with his injury record, I think that's where Anshuman was mentioning that why we need a centre back, right? Another thing about Licha is good. Isn't good defending. Exactly. Fair enough. Krishanu, yes, absolutely. Do join the Discord server. It's free. It's right now ऐसा नहीं है कि it's private right now. It's free. It's a thriving community. ऐसा नहीं है कि Liverpool and United fans है. No. So fans from other clubs, absolute banter. Go for it. Active server. Just be there. No one question. I'm just at a fact that maybe David will not work. Fair enough, man. I mean, everyone has a League One is one of the best. Absolutely, Nikhil, man. Liga has one of the best talents on show. We have got JJ Gabriel. Which player, man? बता सकते हो कमेंट्स पे बट या आई मीन ऑलरेडी 2.5 hour का स्ट्रीम हो चुका है सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु हैज joined and massive thanks again to Anshuman. Obviously we have crossed 200 subscribers today. This channel is only 3 weeks old, guys. The videos are right now hopefully touchwood are doing really well. The live streams are doing well. I'm gonna next week more collabs are coming. Next week mostly Liverpool fans are watching. Agar United fans are also there in the stream, come to that stream. It's going to be a Liverpool discussion next week with Darshan Bhai, that Liverpool guy. Next week ka wo collab hai. I'm already announcing. And also more videos coming. This week, I'm going to post a video on Brian Mbuemo, player profile video, packed in with stats, uh, narration, commentary, goal, edits, सब कुछ मिलेगा उस वीडियो पे. Do stay tuned for that within 3 weeks. Within three days or 4 days, I'll be coming up with that video. Definitely, I'm gonna take that. Last comment I'll take. Thanks, bro. Fingers crossed. Mbuemo on Monday. Here we go. Hopefully, man. Hopefully, Mondays, the weekdays, he transfers confirm होते हैं. So I think I'm expecting Wednesday तक जाएगा. I think Spurs are in the mix, man. If Thomas Frank is in the mix with Spurs might be in the mix for Mbuemo as well. We need to check out JJ Gabriel. I'll do that. Man. I absolutely will do that. हाँ ठीक है it's okay. So thanks everyone who has joined the stream and who the 260 people who are watching on Twitter, man, please come and join the YouTube. It's on my profile on my Twitter. Subscribe kariye, hit the bell notification. New videos are coming. We are to more than 200 subscribers in 3 weeks in the channel. More collabs are coming. It is going to be a massive month going forward in this transfer window, and I can't wait for the season to start, at least the preseason to start. Last time I did watch a lot of preseason games. This time I'm going to do and take an effort to
watch a lot of pre games as well. But absolutely, thanks everyone for joining the stream. It was a fantastic stream, epic stream, one of the best streams of my channel, and appreciate each one of you. Right, each one of you have commented and interacted with me in this chat, and I hope you liked my analysis and my comments on it. But if you haven't checked the videos, do go and check out the videos. Do like, share, and comment on that. I'll really appreciate that. um Last comment ले लेते हैं मिस्टिक से. मिस्टिक के कमेंट्स फैंटास्टिक थे, सो आई विल गिव इट अप टू हिम. होपफुली वी कैन बाय वैंडरवेन फ्रॉम स्पर्स. Oh man, see, love that player, but the thing is, ठीक है, the thing is he's getting injured, man. I mean, he missed 20 odd games this season, and previous season maybe he missed 15 odd game seasons. Great player, but will he stay fit is the main problem, right? So this is the stream, guys. So all everyone who joined the stream today, please do go and if subscribe कर लिया है तो notification bell notification personalized नहीं, go and click all, तभी आपको notification आएगा live stream का. And obviously there will be more sessions happening with Anshuman bhai in the future as well. बहुत मजा आया उनसे बात करके आज. And next week is going to be a Liverpool collab with Darshan bhai, that Liverpool guy. You know, all fans are welcome to join that stream as well. And midweek पे एक stream भी करेंगे if the Mbuemo signing is done, and also some signings are that's gonna happen. I also do a transfer roundup. But Mbuemo का video is a video आ रहा है soon. Just before the here we go, it will come. So I'm working on it. Stay tuned for that. Thank you so much for joining the stream. It was a pleasure. Have a good weekend and great start to Monday if you're already in India time. Thank you so much. Bye bye.